Hello everyone, I'm Navneet Chabra. I'll be taking up the discussion of Science and Technology section. I hope your experience of ANUBHAV was good and you got to learn something new. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के थे. कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट दिख रहे थे, बट इफ यू एनालाइज द ऑप्शंस केयरफुली दे वर एक्चुअली इजी. चलिए तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो स्पेस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट पे है. अच्छा, बाय द वे आगे बढ़ने से पहले हम एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं सेशन का. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल टॉक अबाउट 3 डायमेंशंस इन दिस सेशन. फर्स्टली जो कोर कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का हम वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे. सेकेंडली जो उस क्वेश्चन के पेरिफेरल टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम वो भी डिस्कस कर लेंगे. एंड थर्डली वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाई एलिमिनेशन. राइट, सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन अप्रोच करेंगे आई विल टेल यू द आंसर क्विकली, उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन चालू करेंगे. तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. इट्स बेसिकली एन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो कि 3 स्टेटमेंट है. आपने देखा होगा 2024 में एक 3 स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन का फॉर्मेट यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था. तो पहला स्टेटमेंट कहता है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज जनरली प्रेफर लो अर्थ ऑर्बिट फॉर दी सैटेलाइट्स. लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिट जो कि 2000 किलोमीटर की हाइट से कम है. राइट, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है. Second statement says low Earth orbit satellites generally provide better internet speed than geostationary orbit satellite due to their proximity to the Earth. ये भी सही है. Third statement says कि low Earth orbits हैं they require a smaller constellation का मतलब group of satellite to ensure continuous connectivity. ये statement गलत है. In fact low Earth orbit का जो कॉन्स्टेलेशन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज वे मोर देन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. ऐसा क्यों होता है अब हम डिटेल में बात करते हैं. बाय द वे इसका आंसर फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी. ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड ये जो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है दैट आल्सो एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. कैसे एक्सप्लेन कर रहा है अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे. चलिए तो अब इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मल्टीपल रीजंस. सबसे पहले अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी दैट मणिपुर मिलिटेंट्स वर यूजिंग स्टारलिंक इंटरनेट. स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है विच इज ओन्ड बाय एलॉन मस्क. ऑल्दो एलॉन मस्क ने डिनाई किया बट ये न्यूज तो थी. सेकेंडली आप अगर न्यूज फॉलो कर रहे हैं देन यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस थिंग कि जो स्टारलिंक है जियो both of them are having a tussle over the spectrum allocation for their respective satellite based internet service. Actually there are multiple companies which are in this race of satellite based internet. For example Airtel का OneWeb project है, आपने सुना होगा. For example Amazon का project Kuiper है. अभी यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने अपना एक आइरिस स्क्वायर करके प्रोजेक्ट लाया था. All these are nothing but satellite based internet service. अच्छा, ये जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज हैं actually they are claiming that it's not just a claim, actually it's a reality that satellite based internet can provide cheap high speed internet to remote part of the world. But इसका एक और चैलेंज है जिसकी वजह से भी ये न्यूज में रहते हैं and that is also important for your exam. ये स्पेस ट्रैफिक और स्पेस कंजेशन जो इंक्रीज हो रहा है दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इसरो का पहला सैटेलाइट 1975 में आर्यभट्टा गया था और पिछले 50 साल में इसरो हैज लॉन्च्ड अराउंड 120 सैटेलाइट. बट स्टारलिंक ने पिछले 4 साल में 6000 से ऊपर सैटेलाइट्स भेज दिए. एंड दैट रेजेस अ क्वेश्चन अबाउट स्पेस ट्रैफिक. तो ये सारे इश्यूज कवर करते हैं. सबसे पहले अभी जो हमारा इंटरनेट है वो कौन सा इंटरनेट है. तो 95% of our internet is currently high speed internet is currently through cables and that too undersea cables. In fact आप यह जो मैप देख रहे हैं that is a network of undersea cables जो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं. अब अभी तक का हमारा इंटरनेट तो ये है but the problem is this, there are remote parts of the world, in fact हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पे ये फिजिबल नहीं है कि हम केबल्स के थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू इंटरनेट पहुंचाएं. Even if it is technically feasible, it's not economically feasible because उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और वहां पे डिमांड लो है. And that is where the satellite based internet comes into picture.
सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में हम जो डेटा है वो थ्रू केबल नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू सैटेलाइट्स इन द स्पेस। तो अर्थ के किसी पॉइंट से डेटा सिग्नल जाएगा, सैटेलाइट को हिट करेगा, सैटेलाइट से ये वापस आएगा और दूसरे किसी पॉइंट पे इट विल बी रिसीव्ड, राइट। अब ये जो है हमारा ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है दैट विल बी रिड्यूस्ड इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब बात यह है कि ये जो सैटेलाइट आपको प्लेस करना है, विच ऑर्बिट यू विल प्रेफर फॉर इट। क्या आप इसे एक लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में रखेंगे, इसकी बात समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आई एम अज्यूमिंग कि पता है, बट फिर भी क्विकली देख लेते हैं। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट का जो सबसे प्रोमिनेंट केस है वो है पोलर ऑर्बिट। अभी जो पोलर ऑर्बिट होते हैं ये अप टू 2000 किलोमीटर की हाइट पे होंगे, विच इज अ लेस हाइट। सेकेंडली, ये पोल के अराउंड घूमेंगे, और जब भी आप सैटेलाइट किसी कम हाइट पे रखते हैं, द सैटेलाइट हैज टू मूव वेरी फास्ट, इतना फास्ट कि ये अर्थ का पूरा एक चक्कर 1.5 से 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। Whereas if we talk about geostationary satellite, ये जो ऑर्बिट है दिस इज अराउंड द इक्वेटर, इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है अराउंड 36,000 किलोमीटर, और यहां पे सैटेलाइट बहुत स्लो मूव करते हैं, इतना स्लो दैट दे नीड 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। 24 आवर्स which is the exact time that अर्थ विल टेक टू रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। इसका मतलब अगर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट है तो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखता है, राइट। अब देखिए, मैक्सिमम कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हम रखते हैं वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट में रखते हैं, आपने पढ़ा होगा। रीजन क्या है? मान लीजिए मेरी एक सैटेलाइट टीवी है, अगर मैंने कोई एक डिश अपने रूफ पे इंस्टॉल की, सैटेलाइट अगर इसे कंसिस्टेंटली सिग्नल मिलता रहेगा, अगर ये सैटेलाइट इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा, तो आई डू नॉट हैव टू रोटेट माई डिश, एक ही सैटेलाइट इस पे 24/7 सिग्नल देता रहेगा। सेकेंडली, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बहुत बड़े एरिया में सिग्नल भेज सकते हैं, राइट। इनफैक्ट 1/3 ऑफ द अर्थ कैन बी कवर्ड बाय जस्ट वन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अगर आप 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लगा देंगे तो आप 24/7 पूरी अर्थ पे सिग्नल भेज सकते हैं। तो नॉर्मली इस वजह से हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए ये ऑर्बिट यूज करते हैं। बट इंटरनेट सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट का स्पेशल केस है, इसमें हम लो अर्थ ऑर्बिट को प्रेफर करते हैं। द रीजन, स्पीड। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अर्थ से डेटा भेजेंगे 36,000 किलोमीटर की हाइट पे और वहां से ये वापस आएगा, द टाइम विल बी हायर, और इस टाइम को कहा जाता है लेटेंसी। तो इसका मतलब हाई लेटेंसी होगी, लेटेंसी हाई होगी, और स्पीड जो होगी इंटरनेट की दैट विल बी स्लोअर। तो बिकॉज वी नीड हाई स्पीड इंटरनेट, तो हमें एक ऐसा ऑर्बिट चाहिए, हमें सैटेलाइट ऐसी हाइट पे चाहिए विच इज लो, और वो हमें मिलेगी पोलर ऑर्बिट में, विच इज अ टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, राइट। अब इससे स्पीड तो हाई आ जाएगी, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। जब आप लो अर्थ ऑर्बिट पे सैटेलाइट को रखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल नॉट बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब अगर मेरा कोई भी ग्राउंड स्टेशन है, इस पे ये सैटेलाइट हमेशा फोकस नहीं करता रहेगा। इट मींस आई नीड मल्टीपल सैटेलाइट्स इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट टू मेक श्योर 24/7 सिग्नल आ रहा है। सेकेंडली, जब भी आप लो अर्थ ऑर्बिट यानी कम हाइट से सैटेलाइट को रखेंगे तो इसका जो कवरेज एरिया होगा, जिस एरिया में ये सिग्नल भेज सकता है, दैट विल बी स्मॉलर। कैसे? आप इमेजिन करिए, ये स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं, इमेजिन करिए कि आप टॉर्च ऊपर से फ्लैश कर रहे हैं। आप अगर छोटी हाइट से फ्लैश करेंगे तो जो एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन होगा दैट विल बी स्मॉलर। थोड़ी हाइट बढ़ा देंगे, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन विल बिकम लार्जर, और हाइट बढ़ा देंगे इट विल बिकम इवन लार्जर। सेम हैपेंस विद केस ऑफ सैटेलाइट। अगर आप सैटेलाइट को कम हाइट में रखेंगे तो वो जिस एरिया में सिग्नल भेज सकता है दैट विल बी स्मॉलर। तो लो अर्थ ऑर्बिट एक कम एरिया में सिग्नल भेज सकता है। इसका मतलब अगर आपको पूरी अर्थ को 24/7 सिग्नल भेजना है, यू विल नीड ह्यूज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब आप सोचिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे वापस आ जाइए। सो इट वाज सेइंग कि जो सैटेलाइट्स हैं, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, दे प्रेफर लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज राइट। व्हाई दे प्रेफर? बिकॉज दे कैन प्रोवाइड बेटर इंटरनेट स्पीड। व्हाई? बिकॉज इट हैज लेसर हाइट। तो ये सेकंड सही भी हो गया, सेकंड एक्सप्लेन भी कर रहा है, बट थर्ड वाज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि हमें लो अर्थ ऑर्बिट पे बड़ा कॉन्स्टेलेशन लगेगा, हमें ज्यादा सैटेलाइट लगेंगे। अच्छा, यहीं से इशू निकल के आता है आपका स्पेस कंजेशन का, स्पेस ट्रैफिक का। एज आई सेड कि स्टारलिंक ने पिछले 4 साल में मोर देन 6,000 सैटेलाइट भेज दिए हैं फॉर दिस इंटरनेट सर्विस।
इनफैक्ट 2021 में इसरो ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था विच सेड कि 60% ऑफ द सैटेलाइट्स दैट हैव बीन सेंट इन 2021 दे वर ओनली सेंट बाय स्टारलिंक. इमेजिन द स्पेस ट्रैफिक इट इज कॉजिंग. इस स्पेस ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बीच. यहां पे एक टर्म न्यूज में आता है केस्लर सिंड्रोम. इनफैक्ट रिमेंबर, क्योंकि ये स्पेस ट्रैफिक इस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की वजह से न्यूज में बहुत ज्यादा है, ये केस्लर सिंड्रोम भी डायरेक्टली एज अ वन लाइनर स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में कि ये किससे रिलेटेड है. तो केस्लर सिंड्रोम बेसिकली एक नासा के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी कि अगर लो अर्थ ऑर्बिट में जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, इफ दे क्रॉस अ सर्टेन लिमिट, देन द चांसेस ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज और स्पेस डेब्री विल इंक्रीज. स्पेस डेब्री मतलब जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उससे डिसोशिएट होकर निकलेंगे. और जैसे स्पेस डेब्री बढ़ेगा, द चांसेस ऑफ कोलिजन विल फर्दर इंक्रीज एंड द स्पेस डेब्री विल फर्दर इंक्रीज. सो एक चेन रिएक्शन सा स्टार्ट हो जाएगा. इसी चेन रिएक्शन को, इसी कोलिजन को हम कहते हैं केस्लर सिंड्रोम. तो ये भी आपका एक सेपरेट वन लाइनर क्वेश्चन की तरह आ सकता है. अच्छा, यहीं पे अभी एक लेटेस्ट न्यूज है, इनफैक्ट दिसंबर मंथ की न्यूज है. यूरोपियन यूनियन ने एक आयरिस स्क्वायर करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिनका क्लेम यह है कि हम स्पेस बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट तो देंगे, बट हम स्पेस ट्रैफिक की प्रॉब्लम को भी हैंडल करेंगे. कैसे? सो दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द मीडियम अर्थ ऑर्बिट. मीडियम ऑर्बिट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और लोअर अर्थ ऑर्बिट के बीच की स्पेस है, राइट? सो इट्स अ मिडिल ग्राउंड जहां पे स्पीड और कॉन्स्टलेशन के बीच का एक बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है. तो अभी उनका ये क्लेम है. तो ये आयरिस स्क्वायर प्रोजेक्ट डायरेक्टली अगेन एज अ वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक, तो ये वो सारी बातें हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है बेसिकली एक न्यू टॉल सिस्टम के बारे में जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है. तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो अभी टॉलिंग सिस्टम है, फास्टैग वाला सिस्टम, गवर्नमेंट इज प्लानिंग दैट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टोलिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड टोल कलेक्शन, या फिर आप कह सकते हैं जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन. ठीक, तो सवाल देखते हैं क्या है. सो इट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली बेनिफिट्स ऑफ प्रपोज्ड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड टोल कलेक्शन ओवर द एग्जिस्टिंग फास्टैग सिस्टम. पहला कहता है बैरियरलेस टोलिंग, रिड्यूसिंग द ट्रैफिक कंजेक्शन, ये ठीक है. सेकंड कह रहा है नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी इनिशियल इंस्टॉलमेंट ऑफ डिवाइस. देखिए, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है विच इज एब्सोल्युटली रबिश. अगर आप कॉमन सेंस से सोचे, कोई भी सिस्टम है, अगर आप जानते भी नहीं है कि ये सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग किस तरीके से वर्क करती है, लेकिन अगर सैटेलाइट है तो ग्राउंड में कोई रिसीवर तो चाहिए होगा, व्हीकल में कुछ तो डिवाइस चाहिए होगा. आप जीपीएस यूज करते हैं, वो रिसीवर आपके फोन में है. अगर आपके व्हीकल को सैटेलाइट उससे टोल कलेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसमें व्हीकल में कोई रिसीवर चाहिए. द मोमेंट यू रियलाइज कि ये तो गलत है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. आपका ये स्टेटमेंट ये रिजेक्ट हो जाएगा, दिस विल बी रिजेक्टेड, दिस विल बी रिजेक्टेड एंड यू विल बी ओनली लेफ्ट विथ ऑप्शन सी, राइट? सो ऑल्दो इट माइट फील कि यार हमने ये पढ़ा नहीं है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, बट कॉमन सेंस से इट वाज एब्सोल्युटली रबिश स्टेटमेंट. थर्ड सही है, टोल चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ये भी लॉजिकली डिराइव हो सकता है अगर आपको पता है क्या है. चलिए तो बात करते हैं ये सिस्टम है क्या. सबसे पहले इस सिस्टम को अप्रिशिएट करने से पहले ये देख लेते हैं अभी का एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है. अभी के जो टोल कलेक्शन का सिस्टम है हम उसे कहते हैं फास्टैग. फास्टैग सिस्टम एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है जिसका नाम है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. इसमें आप अपने व्हीकल की विंडशील्ड पे एक फास्टैग का स्टिकर लगाते हैं. दिस फास्टैग स्टिकर इज एक्चुअली कनेक्टेड टू योर बैंक अकाउंट या फिर कोई प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट. अब आप उस वॉलेट को रिचार्ज करते हैं और ये फास्टैग आपका रिचार्ज हो जाता है. नाउ व्हेन यू क्रॉस अ टोल रोड जहां पे टोल कलेक्ट होना है तो वहां पे एक इस तरीके का सेंसर लगा होगा, RFID सेंसर. दिस विल रीड योर RFID टैग और ऑटोमेटिकली उस रोड के लिए जितना भी टोल है वो आपके बैंक अकाउंट से या उस वॉलेट से जिससे आपने कनेक्ट किया है इट विल बी डिडक्टेड, राइट? तो आपका जो वहां पे स्टॉपेज टाइम है बूथ के पास दैट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. जब आप कैश में पेमेंट करते थे तो इट वाज वेरी हाई,
अब इट इज हार्डली लाइक 30-35 सेकेंड, समथिंग लाइक दैट, राइट। बट इस सिस्टम में भी प्रॉब्लम यह है, दो तरीके की प्रॉब्लम है। एक, ऐसा तो है नहीं कि हमें बूथ रखना नहीं पड़ा, वी हैव टू इंस्टॉल बूथ क्योंकि वहां पे सेंसर होगा। सेकेंडली, जो स्टॉपेज टाइम है वो रिड्यूस तो हो गया है, बट इट इज स्टिल देयर, 30-35 सेकंड का तो पॉज होता ही है, राइट। जैसे पॉज होगा ऑब्वियसली ट्रैफिक कंजेशन के चांसेस बढ़ते हैं, राइट। सेकेंडली, आपका जो टोल चार्ज था दैट वाज कंसिस्टेंट, इट मींस दैट नो मैटर हाउ मच यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन दैट टोल रोड, आपको एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट चार्ज पे करना पड़ रहा है। दैट इज वेयर द सॉल्यूशन, द न्यू सॉल्यूशन कम्स which will use the global navigation satellite system for toll collection, या फिर आप जिसे जीपीएस कहते हैं। अभी तो जो हम प्रोमिनेंटली यूज करते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, वो जीपीएस ही है, राइट। ओवर अ पीरियड जब हमारा नाविक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए, वी कैन शिफ्ट टू दैट, जो कि एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। अब ये कैसे वर्क करेगा? तो बेसिकली जो जीपीएस के सैटेलाइट्स हैं, दे विल ट्रैक, आप अपने व्हीकल पे एक ऑनबोर्ड यूनिट रखेंगे, ओबीयू, एक रिसीवर की तरह होगा, एंड द सैटेलाइट विल कॉन्स्टेंटली ट्रैक द लोकेशन ऑफ दिस व्हीकल। द मोमेंट यू एंटर अ टोल्ड रोड, वहां पे एक फेंसिंग होगी एंड दैट विल से कि अब ये टोल्ड रोड है। द मोमेंट यू एंटर दैट, सैटेलाइट विल डिटेक्ट योर पोजीशन दैट नाउ दिस पर्सन एट दिस पॉइंट हैज एंटर्ड अ टोल्ड रोड। जैसे आप उस टोल रोड को एग्जिट करेंगे, दैट सैटेलाइट विल अगेन डिटेक्ट योर पोजीशन कि इतने किलोमीटर चलने के बाद दिस यूजर हैज एग्जिटेड द टोल्ड रोड। ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। ये डिस्टेंस जैसे कैलकुलेट हो गई, अब इस डिस्टेंस के बेसिस पे गवर्नमेंट एक चार्ज रख देगी दैट पर किलोमीटर यू हैव टू पे दिस मच टोल, राइट। तो क्योंकि यहां पे कोई आरएफआईडी सेंसर नहीं है जिसके लिए आपको बूथ चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बूथ खत्म हो गया, कोई फिजिकल बूथ नहीं होगा, राइट। सेकेंडली, बिकॉज सैटेलाइट इज कंसिस्टेंटली ट्रैकिंग, तो आपका वो जो थोड़ा बहुत पॉज होता था, दैट पॉज विल ऑल्सो नॉट बी देयर। एंड बिकॉज satellite can detect the distance that you have traveled, your toll can be collected based on the distance traveled. In fact, इसको गवर्नमेंट ने अभी इनिशियली प्रमोट करने के लिए यह भी कहा है that for first 20 किलोमीटर in a toll road user will not be charged, right? अभी ये प्रोजेक्ट एक पायलट की तरह लॉन्च किया जा रहा है and it will go along with the RFID फास्टैग सिस्टम. Over a period जब ये पॉपुलराइज हो जाएगा, then government plans to ultimately replace that फास्टैग सिस्टम. अभी इसकी एक एक्सक्लूसिव लेन चलेगी जिस लेन में सिर्फ वही व्हीकल ट्रैवल कर सकते हैं which have this OBU installed, जो इसको डिटेक्ट कर सके. अब आप इस क्वेश्चन को वापस देखेंगे, then the statements are very obvious. Barrierless tolling, obviously there is no need to have any physical booth क्योंकि सैटेलाइट कंसिस्टेंटली ट्रैक कर सकते हैं, तो ट्रैफिक कंजेशन भी खत्म होगा, ऑब्वियस ही बात है. सेकंड, हमने बात की कि भाई आपको सैटेलाइट से डिटेक्ट करवाना है तो कोई ना कोई रिसीवर तो चाहिए आपको, तो ये तो स्टेटमेंट ऑब्वियसली कॉमन सेंस के अगेंस्ट है. थर्ड, टोल चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर डिस्टेंस ट्रैवल, दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन है एजीआई पे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. अगेन, अगर आपको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की एग्जैक्ट डिटेल भी नहीं पता है, इवन इफ यू नो दिस थिंग कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक एडवांस कॉन्सेप्ट है विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर. इट इज नॉट राइट नाउ एग्जिस्टिंग, द साइंटिस्ट आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. अगर सिर्फ इतना भी पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. चलिए, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द की फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस फ्रॉम नैरो एआई. बाय द वे, नैरो एआई वही एआई है जो आज आप यूज कर रहे हैं. जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू यूज, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, एलेक्सा, सीरी, गूगल मैप, ऑल ऑफ देम आर नथिंग बट नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पहला स्टेटमेंट कहता है कि एजीआई डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन प्री डिफाइंड एल्गोरिदम फॉर ऑल टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग. देखिए, द मोमेंट यू नो कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है तो ये तो एक लिमिटेड है ना. अगर आप प्री डिफाइंड एल्गोरिदम पे डिपेंड करते हैं तो इट्स अ लिमिटेशन, ये तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाएगा. एजीआई प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फास्टर देन नैरो एआई इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग स्पेसिफिक टास्क. द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट इट्स अ जनरल इंटेलिजेंस, और ये कह रहा है कि स्पेसिफिक टास्क करने में फास्टर हो जाएगा. तो द मोमेंट यू रियलाइज, ये भी रिजेक्ट हो जाता, राइट. थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट, जो इसका ऑप्शन सी है. AGI can perform a variety of intellectual tasks without requiring domain specific training.
इन सब का मतलब क्या है थोड़ी देर में देख लेंगे, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कैसे लॉजिकली रिजेक्ट कर सकते थे। डी इसलिए रिजेक्ट हो जाता, डी को आप देखें दैट एजीआई ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कंप्यूटेशनल हार्डवेयर और फिजिकल सिस्टम। एक बात बताइए, कोई भी मशीन है, राइट, एआई इज अ मशीन, कैसे हार्डवेयर नहीं होगा? इट्स एब्सोल्युटली रबिश, राइट। तो आपका जो स्टेटमेंट डी है वो भी रिजेक्ट हो जाता था कॉमन सेंस से। अब बात करते हैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी विच इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसको समझने से पहले देख लेते हैं नैरो एआई क्या होता है जो आज आप यूज करते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हेनेवर यू रीड अबाउट इट, all of you hear that it's trying to mimic the human intelligence. Actually, the AI which will mimic the human intelligence, that is AI of future, artificial general intelligence. अभी जो narrow AI है, that is not able to mimic human intelligence. Narrow AI क्या करता है? You supply it huge amount of data and you train it as per certain algorithm for a specific task. आप जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको ट्रेन करेंगे, इट विल बी एबल टू परफॉर्म ओनली दैट स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्सा या सीरी देख लीजिए, इट हैज बीन ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन वॉइसेस, इट हैज बीन ट्रेन्ड टू गिव आंसर्स टू ह्यूमन वॉइसेस, इट हैज बीन ट्रेन्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट हाउस डिवाइसेस। ये सब ये कर लेगा, बट क्या एलेक्सा और सीरी चैट जीपीटी की तरह कंटेंट जनरेट कर पाएगा, इमेज जनरेट कर पाएगा? नो, राइट। Look at ChatGPT, that is also a narrow AI. It has been trained to provide, to generate content, image हो, text हो, ये content generate करने के लिए बनाया गया है। But will it be able to build a complete website? आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प कर देगा, but will it be able to build a complete website? या फिर क्या हेल्थ का डायग्नोसिस कर सकता है ये? राइट, आपने हेल्थ के एआई पढ़ा होगा, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हम एआई बिल्ड कर रहे हैं, दे आर एबल टू डायग्नोज डिसीजेस। वो चैट जीपीटी कर पाएगा? नो, इट कैन ओनली डू दैट स्पेसिफिक टास्क फॉर विच इट हैज बीन सप्लाइड डेटा, फॉर विच इट हैज बीन सप्लाइड एल्गोरिदम, जिसमें इसको ट्रेन किया गया है। बट ह्यूमन इंटेलिजेंस तो ऐसा नहीं करती। ह्यूमन इंटेलिजेंस डज नॉट डिपेंड कि भाई आपको इस चीज के लिए ट्रेन किया गया, आप यही कर सकते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस, व्हाट इट डज, इट लर्न्स फ्रॉम द न्यू एक्सपीरियंसेस एंड इट सेल्फ टीचेज इटसेल्फ। तो जो जो एक्सपीरियंसेस ये इनकाउंटर करती जाएगी, उससे ये न्यू चीजें सीखेगी एंड इट विल डू न्यू टास्क्स जो इसने कभी पहले किए भी ना हो, राइट। एंड दैट इज व्हाट एजीआई मीन्स। It is not a specific intelligence. It's not performing a specific task. It's a general intelligence like human intelligence. And it can perform even those tasks for which it was not specifically trained for. तो ये new task भी perform कर सकती है. It is still under development. सिर्फ अभी claim कर रही हैं अलग अलग companies that we are moving towards it. But कोई भी अभी ये achieve नहीं कर पाया है. इनफैक्ट दो ओपन एआई जो कंपनी है उसके सीईओ जो पहले थे सैम एल्टमन ने ये क्लेम किया है कि दे आर गोइंग टू डेवलप एजीआई इन 2025 इटसेल्फ, बट स्टिल दैट क्लेम इज वेरी फार फेच्ड। अच्छा, यहीं पे एक टर्म और आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मींस दैट एआई हैज रीच्ड द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माइंड। Artificial super intelligence means that it has surpassed, AI has surpassed the intelligence of human beings. तो एक जस्ट डिग्री का लेवल है, ये उससे भी एडवांस है, तो ऑब्वियसली ये तो थ्योरेटिकल है ही। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अबाउट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, ये टर्म ऐसा नहीं है कि इस स्पेसिफिक ईयर में कोई बहुत बड़ी न्यूज थी, बट इट ऑलवेज रिमेन्स इन द न्यूज। ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का एक तरीका है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट देयर आर मल्टीपल न्यूज जहां पे इसरो इज आल्सो रनिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू यूज दिस टेक्नोलॉजी टू हैव अ सिक्योर स्पेस कम्युनिकेशन, राइट। तो ये मल्टीपल वजह से न्यूज में रहता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड आप देखेंगे हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आता है, एंड विच विल बी वेरी सरफेस लेवल क्वेश्चन कि ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, राइट। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। Question says that what makes quantum key distribution a critical technology in the context of quantum computing advancement? इसका जो आंसर आपका सही है, that is option C. It secures communication against quantum computer attacks. देखिए,
ये जो क्वांटम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं दे आर स्लाइटली टेक्निकल. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, इवन दोज आर हु आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस थिंग. तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक तो देख लेंगे. अब ऑब्वियसली बात है कि टेस्ट के डिस्कशन में वी डू नॉट हैव द लेवरेज टू गो इनटू टू मच डिटेल. थोड़ा सा जितना यूपीएससी के लिए चाहिए उतना हम समझ लेंगे, बाकी आपको जितना यहां से आ जाए आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. सबसे पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन को सिक्योर करने का एक तरीका है. नाउ देयर इज अ वर्ड व्हिच इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली स्टडी ऑफ ऑल दोस टेक्निक्स व्हिच प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू हैव अ सिक्योर कम्युनिकेशन. तो क्रिप्टोग्राफी सबसे बड़ा तरीका हो गया. अब क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड एक टर्म है इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन का मतलब यह होता है जब आप मैसेज भेज रहे हैं तो उस मैसेज को कोड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इंक्रिप्शन. तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि अभी जो करंटली क्रिप्टोग्राफी होती है जिसे हम क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, हाउ डज इट वर्क. फिर उसके बाद देखेंगे कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज. तो सबसे पहले क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के लिए ये ऊपर वाला जो आपको डायग्राम है ये देखें. मान लीजिए देयर इज अ सेंडर हु इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस दिस रेसिपिएंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट का एक साइफर टेक्स्ट बनेगा. साइफर टेक्स्ट मतलब कोडेड टेक्स्ट जिसको आप किसी तरीके के कोड में कन्वर्ट कर देंगे. इस प्रोसेस को बोलते हैं इंक्रिप्शन, कन्वर्टिंग दी प्लेन टेक्स्ट इनटू अ कोडेड टेक्स्ट. फिर ये जो साइफर टेक्स्ट है, कोडेड टेक्स्ट है, इट विल बी अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू प्लेन टेक्स्ट, देन इट विल बी डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट. राइट. अब ये जो कोडेड को प्लेन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है वी विल कॉल इट डिक्रिप्शन. अब इंक्रिप्शन करने के लिए एक इंक्रिप्शन की रिक्वायर्ड होती है. राइट. एन एल्गोरिथम व्हिच विल कन्वर्ट दिस प्लेन टेक्स्ट इनटू कोडेड टेक्स्ट. सिमिलरली डिक्रिप्शन करने के लिए एक डिक्रिप्शन की रिक्वायर्ड होती है. अब ये इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की इट कैन बी सेम. अगर ये सेम होगी तो हम इसे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, अगर ये डिफरेंट होगी तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं. अब ये प्राइवेट की और पब्लिक की आई डू नॉट थिंक दैट यूपीएससी कैन गो टू दिस थिंग, बट जनरली न्यूज़पेपर में ये टर्म दिखते हैं. एनीवेज पॉइंट ये है दैट वी नीड दिस इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कीज व्हिच विल बी शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रेसिपिएंट. अब देखिए ये जो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी है, इन दिस वी जनरेट दीज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कीज थ्रू वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल पजल्स. बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स लगते हैं जिससे ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जनरेट की जाती है. नाउ दीज आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी बिलीव दैट राइट नाउ दे आर फुल प्रूफ. अगर कोई इस मैसेज को हैक करने की कोशिश करे दे हैव टू सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एल्गोरिथम. बट पॉइंट ये है दैट वी आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग आवर कंप्यूटेशनल पावर. जो क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं दे हैव वेरी हाई कंप्यूटेशनल पावर एंड वी बिलीव दैट इन फ्यूचर दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग द इंक्रिप्शन कीज और डिक्रिप्शन कीज कैन बी हैक्ड अगर हमारी कंप्यूटिंग पावर बहुत हाई हो जाए. नाउ दैट इज वेयर द क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कम्स इनटू पिक्चर. ये इन कीज को जनरेट करने के लिए और कीज को शेयर करने के लिए इट विल नॉट यूज मैथमेटिक्स, इट विल यूज द लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स. राइट. जिससे ये ज्यादा सिक्योर हो जाता है. अब दोज हु आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द क्वांटम पार्ट, अगर आप इतना भी समझ जाएं दिस इज गुड टू गो. बट दोज हु आर कंफर्टेबल आई विल गिव यू स्लाइट हिंट कि कैसे वर्क करता है. आफ्टर दैट यू कैन रीड अबाउट इट मोर. देखिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली अ मोर सिक्योर वे of generating these encryption and decryption keys and sharing this between the recipient and the sender. ये कैसे generate करता है? So basically, what it does is, it uses the photons. It will encode those keys over the photons और ये photon travel करेंगे recipient के पास, right? तो sender will send a beam of photon which will go towards the recipient और इसी photon में encoded होंगी ये keys. अब यहां पे क्वांटम फिजिक्स कहां पिक्चर में आता है? देखिए क्वांटम फिजिक्स सेज दैट दोज सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक ये फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, दे आर एक्चुअली क्वांटम पार्टिकल्स. ये हमारे क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं है जो हम अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं. क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स फॉलो क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स दे फॉलो क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है
that a particular quantum particle can be into multiple states at one point of time. आपने वो श्रोडिंगर कैट का बचपन में एग्जाम्पल सुना होगा, राइट, जिसमें ये कहा जाता है कि श्रोडिंगर का एक थॉट एक्सपेरिमेंट था दैट देयर इज अ कैट, वी पुट दैट कैट इन केज, केज में हमने एक पॉइजन रख दिया है, दैट पॉइजन कैन किल दिस कैट इन 1 hour, बट देयर इज ऑल्सो इक्वल प्रोबेबिलिटी कि ये कैट को किल नहीं करेगा. नो आफ्टर 1 hour जब आपने केज ओपन नहीं किया है, दोनों पॉसिबिलिटी है, कैट कैन बी डेड, कैट कैन बी अलाइव. आपको तभी पता चलेगा व्हेन यू ओपन द केज, तब उस कैट का एक स्टेट हो जाएगा. तो जब तक केज को ओपन नहीं किया गया है, द कैट कैन एग्जिस्ट इन 2 states, इट कैन ईदर बी डेड और अलाइव. नाउ श्रोडिंगर गिव दिस एग्जांपल टू टेल द एब्सर्डिटी, द बिजारनेस ऑफ दिस क्वांटम फिजिक्स, जहां पे एक क्वांटम पार्टिकल मल्टीपल स्टेट में हो सकता है. इसका मतलब ये जो फोटोन हमने भेजा, जिसमें की भेजी, दिस कैन बी इनटू मल्टीपल क्वांटम स्टेट. लेकिन अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, क्वांटम फिजिक्स का एक और प्रिंसिपल ये कहता है, द मोमेंट समवन ट्राइज टू हैक दिस की, अगर मान लीजिए बाहर से देयर इज समवन ईवड्रॉपर जो इस मैसेज को हैक करने की कोशिश कर रहा है, दैट पर्सन हैज टू ऑब्जर्व दिस फोटोन जिसमें की इनकोडेड है. द मोमेंट दैट पर्सन ऑब्जर्व्स दिस फोटोन, इस फोटोन का स्टेट चेंज हो जाएगा. ये जो क्वांटम स्टेट मल्टीपल क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, इट विल नो मोर एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स. और जैसे इसका क्वांटम स्टेट चेंज हुआ, दिस सेंडर एंड रेसिपिएंट दे विल रिसीव द मैसेज दैट समवन इज ट्राइंग टू हैक इनटू योर मैसेज, राइट. तो दिस इज हाउ इट इज अ फूल प्रूफ थिंग. आप जितनी भी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ा रहे हैं, you cannot hack into this, because the moment you try to check this, measure this message कि ये की क्या है, the quantum states of those photon will change and they will be alerted कि someone is trying to hack into the system. चलिए, तो अब ये थोड़ा सा I know कि complicated concept है, जो comfortable है physics के background से हैं, they can understand. Otherwise आप इसे छोड़ भी देंगे, even then UPSC is not going to go into that much detail. Okay, so let's move towards the next question, which is with respect to burning plasma. It's slightly technical topic. It might be that some of you might not have heard about this concept, but it's a very important stage with respect to the commercialization of nuclear fusion. पहले आंसर देख लेते हैं, फिर concepts involved की बात करते हैं. तो statement 1 says that burning plasma sustains fusion reactions with minimal external heating. ये statement सही है. Second statement says that intense magnetic fields provide high temperature required for fusion during the burning plasma. ये statement गलत है. तो basically आपका इसका जो आंसर हो जाएगा that will be C. 1 is correct but 2 is incorrect. अब देखिए again as I said कि elimination की possibility की भी हम बात करेंगे. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, it doesn't matter कि आपको burning plasma exactly नहीं पता है क्या है, but first statement को देखें तो ये कह रहा है कि burning plasma के स्टेज में किसी भी एक्सटर्नल हीटिंग की मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है. और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो हाई टेम्परेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक एक्सटर्नल सोर्स है, राइट. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में. इट मींस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इट मींस ईदर 1 विल बी करेक्ट और 2 विल बी करेक्ट. तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी ए बी रिजेक्ट हो गए, या तो सी होगा या डी होगा, राइट. तो एटलीस्ट 50% पे तो आप अराइव कर सकते हैं. एनीवेज, अब इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं. आप जितने भी न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्टर्स देखते हैं, ऑल दोज आर रिसर्च रिएक्टर्स. ऑल ऑफ देम हैव वन कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू अटेन द स्टेज ऑफ प्लाज्मा बर्निंग प्लाज्मा. आप सबको ये पता है कि हमारी जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज थ्रू न्यूक्लियर फिजन. न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वी आर नॉट एबल टू कमर्शियली यूटिलाइज. रीजन क्या है? बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है दैट हैपेंस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, राइट. उस हाई टेम्परेचर को अचीव करने के लिए यू नीड टू सप्लाई वेरी हाई इनपुट एनर्जी. अब अगर आपका इनपुट ही इतना हाई है, इट मींस योर आउटपुट शुड बी सिग्निफिकेंटली हाई, तभी तो आपका नेट एनर्जी गेन होगा, वेयर योर आउटपुट एनर्जी इज मोर देन इनपुट एनर्जी. इस नेट एनर्जी गेन को अचीव करना इज अ डिफिकल्ट टास्क इन केस ऑफ फ्यूजन. ये जो बर्निंग प्लाज्मा का स्टेज है दैट इज अ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन वेयर यू कैन बी अश्योर्ड कि आपका नेट एनर्जी गेन विल बी हाई. अब बर्निंग प्लाज्मा को समझने से पहले समझते हैं प्लाज्मा क्या है. तो प्लाज्मा इज सिंपली द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. बचपन में जो हमने 3 स्टेट पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड
को आप हीट करते हो, एटम्स मूव फर्दर अपार्ट, लिक्विड बनता है। लिक्विड को हीट करते हो, एटम्स मूव फर्दर अपार्ट, गैस बनता है। व्हेन यू हीट गैसेस, ये एटम्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और बचता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये जो चार्ज पार्टिकल का स्टेट है इसे कहते हैं प्लाज्मा, राइट। अब ये प्लाज्मा न्यूक्लियर फ्यूजन से कैसे रिलेटेड है? बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन इज हैपनिंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। इसका मतलब आपका जो न्यूक्लियर फ्यूल है दैट विल बी इन दी स्टेट ऑफ प्लाज्मा। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है हमारा? तो आपने पढ़ा होगा दैट ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम, जो कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप हैं, दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूक्लियर फ्यूल। अब आप इसे जब हाई टेम्परेचर पे लोगे तो ये प्लाज्मा के स्टेज में होगा। अब देखिए, इनिशियली आपका एक्सटर्नल हीटिंग जो आपको देनी पड़ेगी ये अटेन करने के लिए टेम्परेचर, दैट विल बी वेरी हाई, बट स्लोली फ्यूजन स्टार्ट होगा, फ्यूजन की अपनी एनर्जी जनरेट होगी। अ टाइम विल कम वेयर द फ्यूजन एनर्जी विल बी सो हाई कि यही प्लाज्मा को हीट करता रहेगा, आपको एक्सटर्नल हीट की जरूरत खत्म हो जाएगी। दैट स्टेज विल बी नोन एज बर्निंग प्लाज्मा, राइट। और जब आप एक्सटर्नल हीटिंग का सोर्स हटा देंगे, एट दैट टाइम योर नेट एनर्जी गेन विल बी हाई। अभी जो हमने नेट एनर्जी गेन अचीव किया है डिफरेंट रिएक्टर से, दैट इज 1.5, मतलब हमारा आउटपुट इज 1.5 टाइम्स इनपुट। बट ये भी सफिशिएंट नहीं है टू कॉमर्शियलाइज न्यूक्लियर फ्यूजन। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव जब तक हम 10x का एनर्जी गेन अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक वी कैन नॉट कॉमर्शियलाइज द न्यूक्लियर फ्यूजन। एनीवेज, उन सब की शुरुआत होती है बर्निंग प्लाज्मा से, ठीक। अच्छा, इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, बाय द वे, मैग्नेटिक फील्ड कहां पिक्चर में आता है? आप लोगों ने ये डायग्राम देखा होगा टोकमक का, राइट। टोकमक इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज करते हैं इस प्लाज्मा को कन्फाइन रखने के लिए। प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज सो हाई दैट दे आर ट्राइंग टू मूव हियर एंड देयर। यू हैव टू कन्फाइन देम इनसाइड वन प्लेस जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो। तो ये कन्फाइनमेंट होता है इन द टोकमक थ्रू दी हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल इज जस्ट कन्फाइनमेंट, दे कैन नेवर प्रोवाइड दैट हाई हीटिंग, राइट। तो स्टेटमेंट 2 आपके क्वेश्चन का इसलिए गलत था और स्टेटमेंट 1 दैट इज राइट, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। कॉन्टेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का? देखिए, यूनियन बजट में गवर्नमेंट अनाउंस्ड द प्लान टू डेवलप भारत स्मॉल रिएक्टर्स। दोस भारत स्मॉल रिएक्टर्स आर नथिंग बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये क्या होते हैं ये बात करेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ओवर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब जो आज हमारे पास है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दे हैव हायर एनर्जी आउटपुट पर रिएक्टर कंपेयर टू कन्वेंशनल रिएक्टर। अगेन एक बात बताइए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, नाम में लिखा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, कैसे ये ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट दे कैन बी फैक्ट्री बिल्ट अनलाइक कन्वेंशनल रिएक्टर दैट आर बिल्ट ऑन साइट। ये सही है, कैसे देखें थोड़ी देर में। थर्ड स्टेटमेंट सेज दे कैन डायरेक्टली यूटिलाइज थोरियम एज अ फ्यूल विदाउट द नीड ऑफ ब्रीडिंग। गलत। चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि क्या है। देखिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उन न्यूक्लियर रिएक्टर को कहते हैं विच हैव अ पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन 300 मेगावाट। इसकी एक सब कैटेगरी होती है माइक्रो रिएक्टर्स विच हैव द पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन 10 मेगावाट, राइट। तो ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं विच आर मेंट फॉर रिमोट लोकेशंस, जहां पे आप बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। दीज आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, जो आप मेन ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक रिमोट साइट पे वहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, वहीं यूज कर रहे हो, राइट। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का एक एडवांटेज ये होता है बिकॉज दे आर स्मॉल, सो दैट इज वाई यू कैन बिल्ड देम इन अ फैक्ट्री और सीधा उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो जिस साइट पे आपको लगाना है वहां। Whereas conventional nuclear reactors are huge, you cannot build them in factory and transport, आपको साइट पे जाना पड़ेगा और वहीं पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो स्मॉल मॉड्यूलर को क्योंकि फैक्ट्री में बिल्ड किया जा सकता है तो दे प्रोवाइड यू पोर्टेबिलिटी, राइट। अच्छा, इसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का एक एडवांटेज ये भी होता है कि दे आर इनहेरेंटली सेफ। एक तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि इसमें फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज लेस, यहां पे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होगा दैट इज लेस। मोरओवर दे आर कॉल्ड एज हैविंग पैसिव सेफ्टी सिस्टम। ये वर्ड बहुत ज्यादा
इस टाइप के रिएक्टर के साथ यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए पैसिव सेफ्टी सिस्टम का मतलब ये होता है दैट इवन इफ ह्यूमन डू नॉट इंटरवीन ड्यूरिंग एनी मिसहैपनिंग, दे हैव एन इनहेरेंट सिस्टम टू शट डाउन द प्लांट। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इफ देयर इज एनी मिसहैपनिंग, ह्यूमन इंटरवीन नहीं भी करेंगे, देन ऑल्सो दे कैन शट डाउन, राइट। वो डिटेल सेफ्टी फीचर्स जानने की जरूरत नहीं है, बट दिस थिंग यू शुड नो कि दे आर इनहेरेंटली सेफ। अच्छा, एक और बात, बिकॉज इसमें फ्यूल रिक्वायरमेंट कम है, दे हैव अ स्मॉलर कैपेसिटी, तो जो इनका रीफ्यूलिंग साइकिल है दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली हायर। जनरली एक कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको 1 to 2 ईयर में यू हैव टू रीफ्यूल इट, बट यहां पे 7 to 10 ईयर्स तक का रिफ्यूलिंग साइकिल हो सकता है, राइट। सो दिस इज अनदर एडवांटेज। अच्छा, ये फायदे तो है, बट द चैलेंज इज दिस दैट ऑल्दो थ्योरेटिकली वी बिलीव कि इसकी कॉस्ट जो है, इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दैट इज लेस, बट अल्टीमेटली हाउ इट विल वर्क आउट प्रैक्टिकलिटी में, इसका जो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा ये कितना होगा, वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट आइडिया भी। इफ वी लुक एट ग्लोबली, जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं दे आर इन अ वेरी मैच्योर स्टेज, बट अगर हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, दे आर अ वेरी फ्यू कंट्रीज, इनफैक्ट रशिया एंड चाइना आर द ओनली एग्जांपल्स जहां पे ये ऑपरेशनल है डिसेंटली, राइट। तो देयर इज लॉट टू रिसर्च राइट नाउ फॉर दीज स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एनीवेज, तो कॉन्सेप्ट इसका ये है। अच्छा, इसका थर्ड स्टेटमेंट ये कहता था कि ये थोरियम को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट ब्रीडिंग। दिस इज एब्सोल्युटली बिजार। देखिए, आप सबने पढ़ा होगा that थोरियम इज नॉट अ फिसाइल मटेरियल, मतलब अगर आप इसे न्यूट्रॉन से हिट करेंगे इसका फिजन होता ही नहीं है, इसको ब्रीड करना पड़ता है। तो आप पहले इसे न्यूट्रॉन से हिट करेंगे, ये आपके एक फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट होगा, यूरेनियम 233, और फिर यूरेनियम 233 का फिजन होता है। तो जब थोरियम इज नॉट फिसाइल, तो विदाउट ब्रीडिंग आप रिएक्टर कोई सा भी ले आइए, हाउ कैन यू डायरेक्टली यूज इट? फर्स्टली यू हैव टू ब्रीड इट, राइट। तो जस्ट बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज, ये थोरियम को का डायरेक्ट फिजन नहीं कर सकता है। तो उसमें बहुत बेसिक न्यूक्लियर फिजन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, इसका स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर से कोई लेना देना नहीं है थर्ड स्टेटमेंट का। एनीवेज, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आपका स्पेस मिशन का डिस्क्रिप्शन दिया है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई इट। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो इट सेज द स्पेस मिशन attempts the first ever precision formation flying where two satellites will fly together and maintain a fixed configuration in space. The two satellites will mimic a natural solar eclipse to study the sun's corona. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपका है प्रोवा 3 मिशन का। प्रोवा 3 मिशन इज बेसिकली अ मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बट इसे लॉन्च जो किया था वो इसरो ने किया था थ्रू PSLV, राइट। अब इसमें एक टर्म आता है प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग, इसका डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। सो दिस बेसिकली मीन्स दैट यू विल लॉन्च 2 स्पेसक्राफ्ट टुगेदर and these two spacecraft, these two satellites will maintain a fixed relative position, मतलब इनके बीच की जो distance है, एंगल है, that will remain constant throughout their journey, right? इसे कहते हैं precision formation flying। अच्छा, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? So basically प्रोवा 3 में ये 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाएंगे जिनकी रिलेटिव पोजीशन को कोऑर्डिनेट करके रखा जाएगा, एंड दे विल ट्राई टू हैव एन आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स सो दैट दे कैन स्टडी कोरोना। अब सोलर इक्लिप्स से कोरोना कैसे स्टडी होता है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जस्ट टू रिवाइज, कोरोना है क्या? देखिए, आपके सन के एटमॉस्फेयर में जो आउटर एटमॉस्फेयर है, देयर आर 3 लेयर्स। सन के आउटर एटमॉस्फेयर में देयर आर 3 लेयर्स। द फर्स्ट इज photosphere, the next one is chromosphere and the outermost is corona। और सन का जो इंटीरियर है वो यहां है करीब, राइट। नाउ लॉजिकली व्हाट शुड हैपन कि सन से आप जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे टेम्परेचर शुड डिक्रीज, बट हियर इज द सरप्राइज, कोरोना इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ सन्स आउटर एटमॉस्फेयर। फोटोस्फेयर से यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, राइट। बट अनदर थिंग इज दिस कि फोटोस्फेयर ब्राइटेस्ट है, इसका टेम्परेचर कम है कोरोना से, बट दिस इज द ब्राइटेस्ट। ऐसा क्यों होगा?
बिकॉज फोटोस्फीयर वाली लेयर से जो लाइट आ रही है दैट इज मोर विजिबल लाइट। तो कोरोना का टेम्परेचर तो हाई है बट इट इज नॉट द ब्राइटेस्ट लेयर। अब होता ही है, देखिए फोटोस्फीयर इज द ब्राइटेस्ट, तो व्हेनेवर वी ट्राई टू लुक एट द सन फ्रॉम द अर्थ साइड, जो हमें विजिबल होता है दैट इज फोटोस्फीयर। कोरोना विजिबल ही नहीं होता है, ये इतना ब्राइट है कि कोरोना नॉर्मली हिडन रहता है। इट इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग दी सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स मतलब आपका सन और अर्थ के बीच में मून आ गया है, राइट, बिकॉज मून ब्लॉक्स द सन्स व्यू फ्रॉम अर्थ। तो इस सोलर एक्लिप्स के समय जो कोरोना की लेयर है वो थोड़ी थोड़ी विजिबल होने लग जाती है इस तरीके से, क्योंकि फोटोस्फीयर ब्लॉक हो जाता है और बाहर की कोरोना की लेयर विजिबल होने लग जाती है, राइट। सो दिस इज व्हाट नेचुरली हैपेंस। अब प्रोवा 3 इज ट्राइंग टू डू दिस थिंग, सेम थिंग टू स्टडी कोरोना। नॉर्मली प्रोवा 3 को कोरोना नहीं दिखेगा, राइट। सो व्हाट इट इज डूइंग इज इट विल कैरी 2 स्पेसक्राफ्ट्स इस तरीके से, राइट। वन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट व्हाट दैट विल डू इज इट विल ब्लॉक सन, तो फोटोस्फीयर वाला रीजन ब्लॉक होगा एंड बिहाइंड इट देयर विल बी अनदर स्पेसक्राफ्ट which will study the faint corona which will be visible as if it's a natural solar eclipse, but इस बार ये artificially create किया गया है with the help of this spacecraft। तो जो spacecraft ब्लॉक करेगा उसे कहते हैं occulter, something which blocks light, और ये होगा आपका कोरोनाग्राफ जो कोरोना को स्टडी करेगा। सो दैट इज हाउ प्रोवा 3 इज ट्राइंग टू स्टडी कोरोना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोइंसिडेंटली ये जो ऑफशोर विंड एनर्जी का क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर बजट। तो बजट में एक वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम का मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक, ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है ये भी बात कर लेंगे, बट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज दैट दीज दे यूजुअली जनरेट मोर एनर्जी पर टर्बाइन देन दी ऑनशोर विंड फार्म। ये सही है। Second statement says they are a more reliable source of renewable energy than onshore wind farms due to reduced seasonal variability in wind speed. ये इतना obvious सा statement है, इसे सही होना ही है। Cost per unit of energy for offshore wind turbine is generally lower than that of onshore wind turbine. ये गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा only 2। चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। First of all, you might be knowing this thing कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें फर्स्ट तो सोलर एनर्जी है, सेकंड इज विंड एनर्जी, राइट। अब इस विंड एनर्जी में दो टाइप की विंड टर्बाइंस होती हैं। एक को कहते हैं हम ऑनशोर विंड टर्बाइन एंड सेकंड इज नोन एज ऑफशोर विंड टर्बाइन। ऑनशोर मतलब जो लैंड में, दिस वन। ऑफशोर मींस विच इज इन द वाटर बॉडी, राइट। राइट नाउ व्हाटएवर विंड एनर्जी दैट वी आर जनरेटिंग इन इंडिया, ऑल ऑफ दैट इज ऑनशोर। हम ऑफशोर जनरेट कर ही नहीं रहे हैं राइट नाउ, राइट। सो इसी को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड वन वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम टू प्रमोट द ऑफशोर विंड एनर्जी। अच्छा, ऑफशोर विंड एनर्जी का फायदा क्या होता है? देखिए ऑब्वियस ही बात है कि विंड टर्बाइन जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, दैट इज यूजिंग द एनर्जी ऑफ द विंड। अब ये जो एनर्जी है विंड की, ये आपके सी बॉडीज, वाटर बॉडी के पास ज्यादा यूनिफॉर्म है। सी हैज अ कंसिस्टेंट विंड स्पीड, तो वहां पे आपको विंड की स्पीड अगर कंसिस्टेंट मिलेगी तो इससे दो फायदे हो गए। फर्स्टली यू हैव अ रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अदरवाइज नॉर्मली ऑनशोर में क्या होता है कि विंड इज अ वोलेटाइल थिंग। अभी विंड की स्पीड ज्यादा है तो यू विल गेट मोर एनर्जी, विंड स्पीड विल डिक्रीज, योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कैन इवन स्टॉप, राइट। बट सी के केस में ऐसा नहीं है। तो फर्स्टली रिलायबिलिटी बढ़ गई, जो आपके क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट था, राइट। सेकेंडली, because the wind speed is higher, so your one turbine will generate more electricity. यही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी था। So basically they are interconnected. But कॉस्ट की बात करते हैं कि हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफशोर की ज्यादा है। हमने थर्ड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट किया था, राइट। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफशोर विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट होते हैं दे आर वेरी कॉस्टली। आपको इस तरीके के कुछ अंडर सी केबल्स बिल्ड करने रहते हैं टू प्रोवाइड देम फाउंडेशन, एंड दिस कैरीज लॉट ऑफ कॉस्ट।
In fact, the initial cost is so high that private sector is not much interested in building these projects, and that is where the role of viability gap funding scheme comes. Generally government viability gap funding बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च करती है. इसका मतलब ये होता है these are those projects which are economically desirable, our economy will benefit from them, but financially they are not viable क्योंकि उनकी इनिशियल कॉस्ट इतनी ज्यादा है दैट प्राइवेट सेक्टर इज नॉट मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन देम. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनिशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, राइट. सो दैट इज व्हाट दे हैव डन फॉर दी ऑफशोर फॉर्म्स. अब बिकॉज इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना हाई है तो इसका पर यूनिट कॉस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर द इनिशियल मेनी ईयर्स विल बी वेरी हाई. देयर इज सम ओपिनियन कि ओवर अ पीरियड इसकी जो हाई एफिशिएंसी है पर टरबाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने की वो ज्यादा है, तो ओवर अ पीरियड इट माइट हैपन कि इसकी कॉस्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज हो जाए, बट फॉर इनिशियल मेनी इयर्स इसकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी हायर बिकॉज ऑफ दीज कॉस्ट इन्वॉल्व. ठीक है, चलिए, तो ये आपके विंड एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गए जो भी आपको जानना था. एक और फैक्चुअल बात, आपका गुजरात जो है दैट यूजुअली रिमेन्स एट टॉप इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ विंड. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. स्पेडेक्स मिशन पे है, आप सबने इसका नाम तो सुन ही लिया होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में. द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटिंग इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी थ्रू स्पेडेक्स मिशन. स्पेडेक्स मिशन का फुल फॉर्म क्या है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन. पहला स्टेटमेंट कहता है इनेबलिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन, सही है. सेकेंड, फैसिलिटेटिंग फ्यूचर लूनर मिशन, ये भी सही है. इंप्रूविंग सैटेलाइट सर्विसिंग कैपेबिलिटी, ये भी सही है. बट फोर्थ इज इनकरेक्ट, रिड्यूसिंग द नीड फॉर ग्राउंड बेस्ड सैटेलाइट कंट्रोल. इट माइट फील कि इतने सारे कैसे हमसे एडवांटेज पूछ लिए गए हैं, एप्लीकेशंस पूछ लिए गए, बट इवन इफ यू नो द टर्म डॉकिंग, अगर उसका मतलब भी पता है ना, दिस क्वेश्चन कैन बी इजिली क्रैक्ड. देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी इसमें कंफ्यूज होने की. बात करते हैं डॉकिंग होती क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्पेडेक्स मिशन इट वाज लॉन्च जस्ट फ्यू डेज बैक. न्यूज में तो बहुत साल भर से है, राइट, बट इट वाज लॉन्च जस्ट फ्यू डेज बैक, इनफैक्ट इन जनवरी आई थिंक. अब स्पेस डॉकिंग का ये मतलब होता है दैट देयर आर टू स्पेसक्राफ्ट्स इन दी स्पेस एंड यू अटैच देम, you connect them, right? This process of connecting, attaching the two spacecraft is known as docking. और इसको रिमूव करोगे तो इसे अनडॉकिंग कहते हैं. But why is it so important? Because there are many missions जहां पे आप रॉकेट से सारे कंपोनेंट्स एक बार में लॉन्च नहीं कर रहे हो. That mission is big, so what you do is you launch one component in space at one time. फिर कुछ समय बाद यू लॉन्च अनदर कंपोनेंट और उसको स्पेस में ले जाके कनेक्ट करते हो. फॉर दैट यू नीड दिस डॉकिंग टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, राइट. अब जब हम अपना स्पेस स्टेशन रखेंगे तो फिलहाल जो उसकी डिटेल्स आई है दैट दिस स्पेस स्टेशन विल हैव 5 मॉड्यूल्स, इसके 5 कंपोनेंट्स होंगे. अब ये 5 कंपोनेंट्स जाके स्पेस में ही अटैच होंगे, राइट. फॉर दैट यू नीड डॉकिंग टेक्नोलॉजी. तो आप इसका ऑप्शन देखिए, इस क्वेश्चन का जो था, द फर्स्ट वन वाज इनेबलिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन. दैट इज ऑब्वियस. अनदर थिंग, आप सबने चंद्रयान 4 की डिटेल सुनी होगी दैट इट्स अ सैंपल रिटर्न मिशन. सैंपल रिटर्न मिशन मतलब वी विल ब्रिंग बैक सम सैंपल फ्रॉम मून सरफेस टू अर्थ. ये कैसे होगा? तो मून की सरफेस पे एक लैंडर जाएगा, लैंडर मून से मटेरियल कलेक्ट करेगा और इफ इस लैंडर से वन मॉड्यूल will launch, ये इसे बोलेंगे हम ascent module. This ascent module will go up and it will attach to the orbiter. ये अपना मटेरियल लेके ऑर्बिटर में अटैच होगा. अब अगेन यू नीड अटैचमेंट ऑफ दिस ascent module with the orbiter. For that you will need docking, right? तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. थर्ड आप देखिए, थर्ड सेज रिड्यूसिंग द इंप्रूविंग द सैटेलाइट सर्विसिंग कैपेबिलिटी. सैटेलाइट सर्विसिंग मतलब रिफ्यूलिंग करनी है, रिपेयर करना है. ऑब्वियसली अगर आप रिपेयर करना चाह रहे हो तो आपको एक मॉड्यूल उसमें अटैच करना पड़ेगा, राइट. तब आप उसकी सर्विसिंग करोगे. तो वेरेवर यू फील कि आपको मटेरियल का ट्रांसफर करना है, क्रू का ट्रांसफर करना है, एक बिगर मिशन है उसके कंपोनेंट्स में लॉन्च करना है, ऑल दीज थिंग्स विल रिक्वायर स्पेस डॉकिंग, राइट. फोर्थ ऑप्शन को देखिए,
It says reducing the need for ground based satellite control. Why? दो यूनिट अटैच हो रही हैं, उससे ग्राउंड जो स्टेशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? ग्राउंड स्टेशन विल नीड टू कोऑर्डिनेट in the same way as if they were doing earlier. There is no connection between them, right? So fourth is completely unrelated thing. Achha, space docking, it might sound simpler, but right now only 3 countries have this space docking technology: USA, Russia and China. These are the only 3 countries. And if we successfully demonstrate, जो हमने अभी space docks Spadex mission launch किया है, इसमें we have launched 2 small spacecraft और इसको हम स्पेस में जाके डॉक करवाएंगे. If we become successful, then we will be the 4th country to have this docking technology, right? अच्छा, ये ना हम 3rd हैं 4th हैं, ये प्लीज थोड़ा याद रखिएगा. यूपीएससी ने ये काम 2 बार किया हुआ है, राइट? 2 मिशन के साथ पूछ रखा है कि इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है टू हैव दिस टेक्नोलॉजी. एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू 5G. 5G कई साल से न्यूज में है बट अभी तक नहीं आया है एंड चांसेस आर कभी भी आ जाएगी क्वेश्चन. एनीवेज, पहला स्टेटमेंट कहता है 5G यूटिलाइजेस वेवलेंथ्स दैट आर लॉन्गर कंपेयर टू दोज यूज्ड इन 5G. ये गलत है. 5G जो है हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज करता है. हाई फ्रीक्वेंसी मींस लो वेवलेंथ. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज राइट. The waves with higher wavelengths can penetrate obstacles more effectively and cover longer distance. ये सही है. तो आपका आंसर हो जाएगा डी. क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं. देखिए, जब भी आप वेव्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मीडियम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, देन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मैटर: वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. In fact, both of them are inversely proportional. कैसे रिलेटेड है, क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं. दिस इज द वेव. वेवलेंथ क्या है? दिस इज द वेवलेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिमिलर पॉइंट्स. एक साइकिल में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट इज वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि पर यूनिट टाइम में वेव कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. अगर आप इस वेव को देखें, वेव ए, वेव बी, बी इज कवरिंग मोर साइकिल इन पर यूनिट टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी. बट इट इज ट्रैवलिंग लेस इन 1 साइकिल, तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, राइट? सो इसकी वेवलेंथ इज लेस बट फ्रीक्वेंसी इज हाई. हियर अपोजिट इज ट्रू. वेवलेंथ हाई है, फ्रीक्वेंसी लो है. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव में योर डेटा ट्रांसफर स्पीड विल बी हायर. व्हाई? इसको विजुअलाइज करने के लिए जस्ट इमेजिन करिए, जब आप वेव्स के फॉर्म में डेटा भेजते हैं, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनकोडिंग योर डेटा इन दी वेव्स इटसेल्फ, राइट? तो अगर ये वेव टाइटली पैक्ड है, जब भी आपको हाई फ्रीक्वेंसी वेव इमेजिन करनी है, इमेजिन अ टाइटली पैक्ड वेव. जब ये टाइटली पैक्ड वेव है, इसमें आप डेटा इनकोड करेंगे, ऑब्वियसली यू कैन सेंड मोर डेटा पर यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि ये ज्यादा साइकिल कवर कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब अगर आप ये वेव यूज करेंगे, योर डेटा स्पीड विल बी हायर. एंड दिस वेव इज ऑल अबाउट हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ. अब आप बताइए, 5G में ऑल ऑफ यू नो दैट यू विल बी गेटिंग मोर स्पीड. यू वांट मोर स्पीड. इफ यू वांट मोर स्पीड, ऑब्वियसली यू विल यूज हाई फ्रीक्वेंसी वेव, एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव मतलब लो वेवलेंथ वेव. तो अब इस स्टेटमेंट को देखिए. स्टेटमेंट वेव ये कह रहा है लॉन्गर वेवलेंथ यूज होगी. नहीं, लॉन्गर वेवलेंथ तो लूज वेव है, उसमें डेटा स्पीड लो होगी. अच्छा, वेवलेंथ से ऑब्स्टेकल्स को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है? देखिए, टाइटली पैक्ड वेव यानी हाई फ्रीक्वेंसी वेव का एडवांटेज ये है कि डेटा स्पीड विल बी हायर, बट इट कैन नॉट पेनिट्रेट ऑब्स्टेकल्स बेटर. इसे विजुअलाइज करने का तरीका देखिए. इसकी जो एक्चुअल फिजिक्स है दैट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. वी कैन टॉक अबाउट इट, बट आई डू नॉट थिंक कि वो हमारे लिए हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. आई विल जस्ट टेल यू वन ट्रिक टू रिमेंबर. आप ये इमेजिन करिए कि पाथ में कोई बिल्डिंग है, राइट? अगर एक हाई वेवलेंथ वेव होगी, इट कैन क्रॉस दिस ऑब्स्टेकल वेरी इजीली.
लेकिन अगर आप एक लो फ्रीक्वेंसी वेव में लाएंगे तो ये इतनी कॉम्पैक्ट है दैट इट विल बी अफेक्टेड बाय द ऑब्स्टिकल्स वेरी इजीली. प्लीज रिमेंबर, एक्चुअल फिजिक्स इज वेरी डिफरेंट. दिस इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन टू मेक यू रिमेंबर. ठीक, तो आपको यह याद रखना है कि हाई वेवलेंथ वाली वेव कैन क्रॉस दी ऑब्स्टिकल्स इजिली. अब 5G में तो हम लो वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, राइट? इसका मतलब 5G की जो वेव है दैट विल बी अफेक्टेड बाय ऑब्स्टिकल्स मोर इजिली, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी इन द न्यूज कि 5G में ज्यादा टावर की रिक्वायरमेंट है. क्यों? बिकॉज अगर आप बहुत डिस्टेंस में टावर रखोगे तो ये उतनी डिस्टेंस ये ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी 5G वेव विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द ऑब्स्टिकल. सो यू नीड क्लोजर टावर्स, इसलिए टावर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, राइट? अब आप जस्ट इस डॉट्स को कनेक्ट करिएगा दैट व्हेन यू नीडेड 2G 3G, आप जो वेवलेंथ यूज कर रहे थे दे वर हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ. क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम आवर प्रायोरिटी वाज टू हैव द कनेक्टिविटी इन द फार्देस्ट पॉसिबल कॉर्नर ऑफ द कंट्री. तो आप चाहते थे कि ऐसी वेव हो विच कैन पेनिट्रेट द ऑब्स्टिकल्स मोर इजिली, क्योंकि उस समय डेटा स्पीड से ज्यादा द कनेक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ दैट वी हैव कनेक्टिविटी इन एवरी कॉर्नर, नाउ वी वांट मोर स्पीड, और मोर स्पीड के लिए यू नीड हायर फ्रीक्वेंसी वेव या फिर लोअर वेवलेंथ वेव. ठीक, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. इसके बाद तो क्वेश्चन इज वेरी इजी. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन है. सिकल सेल एनीमिया, दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं. सिकल सेल एनीमिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिसीज फॉर योर एग्जाम, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिकल सेल एनीमिया मिशन चल रहा है टू एलिमिनेट दिस डिसीज बाय 2047, राइट? एंड इनफैक्ट दिस डिसीज इज वेरी प्रोमिनेंट इन द ट्राइबल रीजन, तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? अच्छा, इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम, दिस इज द रिजल्ट ऑफ एनीमिया. ये कॉज नहीं है. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन विद इन आरबीसी, नहीं, ये नॉर्मल एनीमिया का केस है. म्यूटेशन इन द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन, ये सही है. ये भी गलत है, प्रोडक्शन बंद नहीं होता है आरबीसी का. चलिए बात करते हैं कि क्या है सिकल सेल एनीमिया. आपकी ब्लड में एक टाइप का कंपोनेंट होता है विच इज नोन एज रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन. नाउ दिस आरबीसी and hemoglobin, they are responsible for carrying oxygen inside your body, right? अगर RBC और hemoglobin if they are unhealthy, then the body will have less oxygen. Oxygen कम होगी, body will feel lethargic, tired, right? अब normally anemia जो होता है that is because of deficiency of iron, क्योंकि deficiency of iron से hemoglobin नहीं बन पाता है. For healthy hemoglobin formation, your body needs iron. आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा. दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल एनीमिया. बट सिकल सेल एनीमिया इज अ स्पेशल केस. यहां पे होता यह है, नॉर्मली जो आपकी आरबीसी का शेप होता है दैट इज स्फेरिकल, बट इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन वन ऑफ द जीन्स इन द बॉडी, उस केस में ये जो आरबीसी है ये सिकल शेप्ड हो जाती है. सिकल इसे कहते हैं, जो आपका एग्रीकल्चरल टूल होता है, इसे आप क्रिसेंट शेप्ड भी कहते हैं. तो जब आरबीसी का शेप ये हो जाता है, because of this what happens is they get obstructed while traveling through the blood vessel. blood vessel से जब इन सेल को ट्रैवल करना है तो spherical shape is very easy, but ये sickle shape this creates a problem. ये blood vessel में ब्लॉक होने लग जाता है. because of that RBC की जल्दी डेथ होती है, and because of that ऑक्सीजन बॉडी में धीरे धीरे लो होने लग जाती है. इनफैक्ट जब ये ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं, the people suffering from this disease they often face very severe pain also, right? ये केस होता है सिकल सेल एनीमिया का. क्यों हो रहा है? because there is some problem in some of the gene. इनफैक्ट ये जो जीन होती है क्रोमोसोम 11 पे होती है, राइट? आप सबने पढ़ा है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हम सबके पास, उसमें से जो 11th नंबर का क्रोमोसोम है उसमें एक जीन पाई जाती है. अगर उसमें प्रॉब्लम हो गई देन द पर्सन गेट्स सिकल सेल एनीमिया. एक और चीज याद रखिएगा कि अगर किसी पर्सन में दो पेयर ऑफ डिफेक्टिव जीन है, ये क्रोमोसोम 11 वाली, मतलब एक पेरेंट से एक आ रही है डिफेक्टिव, दूसरे पेरेंट से दूसरी डिफेक्टिव आ रही है, ओनली देन दिस पर्सन विल हैव सिकल सेल एनीमिया. अगर सिर्फ इसमें एक है ये डिफेक्टिव जीन, इन दैट केस दिस पर्सन विल नॉट सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, बट दिस पर्सन कैन बी कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया.
मतलब ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन में वो डिफेक्टिव जीन ट्रांसफर कर सकता है, बट दिस पर्सन विल नॉट सफर अनलेस एंड अनटिल इसके पास 2 पेयर ऑफ डिफेक्टिव जीन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक अवेयरनेस का क्वेश्चन है। सो ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड द केस ऑफ सुनीता विलियम्स दैट शी इज स्टक इन ISS, राइट। ISS से सुनीता विलियम्स और उनके साथ के जो साइंटिस्ट हैं, दे हैड टू रिटर्न बैक, बट while when they were about to return, the spacecraft which was supposed to carry them, वहां से हीलियम का लीकेज होने लग गया था, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कुड नॉट बी ब्रॉट बैक एंड वी आर अगेन वेटिंग फॉर फ्यू मंथ्स टू ब्रिंग देम बैक। काफी सारे और स्पेस मिशन के साथ भी हुआ है, चंद्रयान 2 के साथ भी हीलियम लीकेज का केस हुआ था, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि हीलियम यूज क्यों होती है स्पेसक्राफ्ट में। जिसको थोड़ी सी बचपन की केमिस्ट्री याद है उसके लिए पॉसिबल भी था ये गेस कर पाना अगर आपने पढ़ा भी नहीं है। इसका आंसर एक्चुअली है सी, बट हाउ यू कुड हैव रीच्ड टू दिस पॉइंट। हीलियम अगर आपको याद हो तो एक इनर्ट गैस है, राइट, विच इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव है इसका मतलब ये कंबस्टेबल भी नहीं है, राइट, ये बर्न ही नहीं करती है, और अगर ये बर्न नहीं करेगी तो ये प्रोपेलेंट की तरह कैसे यूज हो सकता है। प्रोपेलेंट क्या है, बेसिकली फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सचर जिसे बर्न होना है और रॉकेट को थ्रस्ट देना है। अगर ये इनर्ट है तो बर्न कैसे होगी, तो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन बी इज सेइंग कि इट इज बर्न अलोंग विद लिक्विड हाइड्रोजन, बट प्रॉब्लम तो अगेन वही है कि ये बर्न हो ही नहीं सकती। डी वाज ट्रिकी टू गेस अगर लॉजिक से, ठीक है, बट यूजुअली क्या होता है कि जो आपका फ्यूल होता है और ऑक्सीडाइजर होता है वही कूल टेम्परेचर पे जाके आपकी नोजल को कूल डाउन करता है, ये हीलियम से नहीं किया जाता है। दिस वाज ट्रिकी टू गेस फ्रॉम लॉजिक, बट ए और बी तो रिजेक्ट किया जा सकता था। हीलियम का एक्चुअली यूज ये होता है, देखिए आपका जो फ्यूल टैंक है, आप जैसे जैसे फ्यूल यूज करते जाएंगे रॉकेट में, इट विल देयर विल बी वैक्यूम इनसाइड द टैंक, राइट। वैक्यूम होगा इसका मतलब जो फ्यूल टैंक के अंदर का प्रेशर था, दैट प्रेशर विल बी डिस्टर्ब्ड। तो आपका जिस फ्लो से फ्यूल फ्लो कर रहा था इंजन की तरफ, दैट फ्लो माइट गेट डिस्टर्ब्ड। रॉकेट के इंजन में यू नीड वेरी प्रिसाइज फ्लो ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन टुवर्ड्स द इंजन, एक्सट्रीमली प्रिसाइज। और इस एक्सट्रीमली प्रिसाइज फ्लो के लिए आपके फ्यूल टैंक का जो प्रेशर है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आपका फ्यूल खत्म होते जाएगा उसके प्रेशर को मेंटेन करना है, और उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है हीलियम, राइट। तो हीलियम उसको प्रेशराइज करके रखा रहता है। नाउ व्हाई ओनली हीलियम, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि हीलियम इनर्ट है तो ये आपके फ्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, इनफ्लेमेबल नहीं है, सो इट द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इज लेस, राइट। सो दैट इज व्हाई वी यूज हीलियम टू प्रेशराइज, एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज लाइट, तो आप जो वेट कैरी कर रहे हो रॉकेट में उसमें एक्स्ट्रा एडिशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज रिलेटेड टू माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्यों न्यूज में था, बिकॉज ऑफ द नोबेल प्राइज। So two scientists got the Nobel Prize for their contribution towards the understanding of microRNA. Although question looks slightly technical, but अगर आप इसका core concept समझते हैं तो बाकी options बहुत easily eliminate हो जाते। क्या है question? So question says which of the following is most likely consequence of malfunctioning of microRNA regulation? Answer इसका actually first है uncontrolled cell growth due to improper gene regulation. And which can also lead to cancer. तो जब भी आप माइक्रो आरएनए का मेल फंक्शन देखेंगे, one of the disease which is everywhere written that is cancer. Cancer is nothing but uncontrolled cell growth, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। देखिए, माइक्रो आरएनए इज एक्चुअली अ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल which regulates the production of protein in a cell. Which regulates the production of protein in a cell. हमारी सेल में every time our cell continuously our cell is making actually proteins, right? ये प्रोटीन का प्रोडक्शन माइक्रो आरएनए रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अगर माइक्रो आरएनए नहीं होते तो ये प्रोटीन का प्रोडक्शन अनलिमिटेड हो जाता, ये रुकता ही नहीं, राइट। अब इसमें दो चीजें हमें समझने की जरूरत है। एक, हाउ डज आवर बॉडी मेक द प्रोटीन, and second thing that we need to understand is how does microRNA regulate this process. तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल प्रोटीन बनाती कैसे है। पहले प्रोटीन होता क्या है, तो प्रोटीन इज बेसिकली मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड एक तरीके का केमिकल है। देयर आर टोटल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड की चेन है आपका
इसकी चेन है प्रोटीन। एमिनो एसिड के जो अटैचमेंट का सीक्वेंस है, इफ यू चेंज दिस द नेचर ऑफ प्रोटीन विल चेंज, एंड इफ द नेचर ऑफ प्रोटीन चेंजेस, इसका जो फंक्शन है बॉडी में दैट विल चेंज, राइट। अब ये जो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है सेल के अंदर, ये होता है सेल के कंपोनेंट में विच इज नोन एज राइबोसोम। सेल में ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर एक कंपोनेंट है राइबोसोम। राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। यहां पे एमिनो एसिड को कंबाइन किया जाता है, लेकिन राइबोसोम डज नॉट नो कि इसको किस सीक्वेंस में अटैच करना है। ये जो सीक्वेंस है दैट इज लाइंग इन द फॉर्म ऑफ अ कोड, और ये कोड है आपके डीएनए के पास। डीएनए में देयर आर मेनी जीन्स, हर जीन के पास एक कोड है एक प्रोटीन बनाने का, ठीक। जीन का जो कोड है व्हेन इट मैनिफेस्ट्स इनटू प्रोटीन, इस प्रोसेस को कहते हैं जीन का एक्सप्रेशन। जीन में जो कोड छुपा है व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन टाइप ऑफ प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन एक्सप्रेशन। अब ये कैसे होता है? देखिए, जो फैक्ट्री है प्रोटीन को बनाने की दैट इज लाइंग आउटसाइड न्यूक्लियस, और कोड है न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या कोड लेके डीएनए खुद आएगा? नहीं, डीएनए इज अ वेरी प्रेशियस इंफॉर्मेशन। डीएनए विल नॉट डायरेक्टली कम टू राइबोसोम। डीएनए क्या करेगा? अपनी कॉपी बनाएगा, उस कॉपी को बोलेंगे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। दिस इज डिफरेंट, दिस इज नॉट माइक्रो आरएनए, दिस इज मैसेंजर आरएनए। दिस इज द कॉपी ऑफ द डीएनए। तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट की, जहां पे एक जीन है, उसका कोड ट्रांसलेट होगा एक टाइप के माइक्रो मैसेंजर आरएनए में। ये मैसेंजर आरएनए कोड लेके जाएगा राइबोसोम के पास, and now ribosome will start attaching the amino acid and start forming protein। तो ये जो कॉपी बनने की प्रोसेस है डीएनए से एमआरएनए की, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए का जब कोड रीड किया जाता है राइबोसोम में, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। और ये दोनों मिला के बनता है जीन एक्सप्रेशन, कन्वर्टिंग ऑफ कोड ऑफ वन जीन इनटू प्रोटीन, ठीक। अब यहां पे माइक्रो आरएनए पिक्चर में कहां आता है? देखिए, अगर माइक्रो आरएनए नहीं होगा तो एक बार कोड कॉपी हो गया, this mRNA will keep on translating and protein will keep on forming। और ये प्रोसेस अगर कंट्रोल नहीं की गई तो कुछ जीन ऐसी हैं जो सेल डिवीजन को प्रमोट करती है। अगर उस जीन का एक्सप्रेशन होता रहा, दिस सेल ग्रोथ विल बिकम अनकंट्रोल्ड। तो इस प्रोसेस को रोकना होगा। नाउ हु कंट्रोल्स दिस प्रोसेस? माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्या करते हैं? They go and attach with a specific part of mRNA, मैसेंजर आरएनए। एक जो लंबी चेन है, इस मैसेंजर आरएनए की एक स्पेसिफिक पार्ट में जाके अटैच हो जाएंगे। अगर उस स्पेसिफिक पार्ट वाला जीन ब्लॉक कर दिया जाए, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो वो पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ट्रांसलेशन रुक जाएगा, या वो पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो बट ट्रांसलेशन विल नॉट हैपन, तो अल्टीमेटली प्रोटीन नहीं बन पाएगा, राइट। एंड दैट इज हाउ द प्रोटीन सिंथेसिस गेट्स रेगुलेटेड। इसके बिना पे ये प्रोसेस रुकेगी नहीं, right? This is what microRNA is doing. It is regulating the expression of a gene. It is regulating the conversion of that code of the gene into protein. ठीक? और ये अगर malfunction हो जाए तो सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली ये जो है ना आपके डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन देती है, बेसिक कॉमन सेंसिकल। देयर इज नो रूल कि ये कौन सा वाला डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आएगा, दीज आर सपोज टू बी रैंडम। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए दिया था सिंपली जस्ट टू चेक योर कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट्स इट। इसकी बहुत डिटेल फिजिक्स तो जानने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस से ही सॉल्व किया जा सकता था। तो द सिचुएशन सेज कि एक पुलिस व्हीकल है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल को कैरी किया जा रहा है एक जेल से लेके दूसरी जेल में। ऑन द वे क्रिमिनल्स बिगिन टू फाइट, उनके बीच फाइट स्टार्ट होती है, एंड ड्यूरिंग अ शार्प टर्न क्रिमिनल ग्रुप शिफ्ट्स देयर कंबाइंड वेट टू वन साइड ऑफ द व्हीकल। ऐसा करने से व्हीकल के ओवरटर्निंग की, टिप होने की प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? बहुत कॉमन सेंसिकल है अगर आप सोचे। देखिए, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास is basically a point, an imaginary point where all the weight of an object is supposed to be concentrated. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है तो उसका सेंटर में ही होता है यूजुअली सेंटर ऑफ मास। अब अगर ये ग्रुप ऑफ क्रिमिनल व्हीकल की एक साइड शिफ्ट कर जाएगा, लेट्स से राइट साइड शिफ्ट कर जाता है, तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट लैटरली, उस साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। अब एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। अगर मान लीजिए इसी दौरान पे व्हीकल टेक्स अ शार्प टर्न,
तो क्या होगा, अचानक से वो एक टर्न में स्पीड बढ़ाएगा तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। अब दो चीजें होंगी, वेट ऑफ मास शिफ्ट हो गया सडनली और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अचानक से बढ़ गया, दैट कॉजेज द इंक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरटर्निंग। इसी से कार्स कई बार टॉपल कर जाती हैं, राइट। अब ये ऑप्शन जो है आपका, अगर आप इसे देखें तो ये आपका ऑप्शन बी में लिखा गया है, द वेट मूविंग टू वन साइड शिफ्ट्स द व्हीकल सेंटर ऑफ मास मेकिंग इट इजियर टू टिप ओवर। अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे ना तो दो ऑप्शन तो दे आर एक्सट्रीमली सिली, देयर इज नो पॉइंट ऑफ देम। द फर्स्ट ऑप्शन सेज स्पिनिंग फोर्स ऑफ द व्हीकल बिकम्स वीकर मेकिंग इट लूज बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिनिंग फोर्स एक टेक्निकल टर्म नहीं है, इट लूजली रिफर्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो टर्न के दौरान पे, शार्प टर्न के दौरान पे इट विल इंक्रीज, ये वीक कैसे होगा, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ऑप्शन डी को देखिए, इट सेज व्हीकल्स व्हील ऑन द हेवियर साइड लूज ग्रिप। जो हैवी साइड है वो तो उसकी ग्रिप स्ट्रांग होगी, राइट, उसकी ग्रिप लूज की होगी, सो अगेन इट डज नॉट मेक एनी सेंस। द third statement that is slightly actually partially true, it says the side with the less weight becomes lighter making the vehicle easier to flip। ये बात सही है कि जो लाइटर साइड है वो और लाइट हो गया है तो इट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग। इट्स पार्शियली ट्रू बट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज बी, क्योंकि इसके लाइट होने से हुआ क्या है, सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो गया है एंड सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से the chances of flipping has increased. So the more appropriate explanation is actually option B. ठीक है, so I think ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है। So I hope that you got to learn something new. बाकी आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है पेपर से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से रिलेटेड, प्लीज लेट अस नो so that we can incorporate those things in the future Anubhav. Thank you very much. Hello. Greetings to all the students. I welcome you all in this discussion video of Anubhav 2025, the first Anubhav of 2025 for your prelims preparation. So let's dive into it and start with the questions of IR and miscellaneous sections. So to deal with question number 36 in the Anubhav paper 1, question says that Europe's longest river falls into the landlocked reservoir. Okay, its coastline is shared by 5 countries. There have been growing concerns about its rapid shrinking in the recent year. If you people just could have been gone in the area of November 2024, right? A COP meeting was held in Baku, Azerbaijan, and there was a concern raised that regarding the shrinking of the Caspian Sea, and perhaps that is why this question has been asked. Although if we just know about the basics of this November 2024 COP meeting, we could have been, or we could have get the answers, right? But although yes, the answer will be Caspian Sea, but there are certain additional information that you need to understand. For say these 5 countries, right? So if you go with this part, it is said KIAT. Always remember these kind of acronyms. This is Kazakhstan, Iran, Azerbaijan, Russia and Turkmenistan. These are the 5 countries which are having the coastlines shared with Caspian Sea. So this is the answer to this question will be C. Move ahead. Question number 37. This question says consider the following pairs: areas of conflict in news and the country associated, or the location of the country associated. First, Danjo Island. This is Japan. Yes, this is definitely correct. Second, Cook's region. Cook's region, most of the history students must have heard this word, Cook's region. So this statement with respect to the Russia is definitely correct. The third is Darfur, or certain people call it as Darfur, right? Darfur is a part of Western Sudan, the Western Sudan. And if you just go with the basics of the international relation, you must have heard that there was certain humanitarian crisis in 2000 series took place. And that is why this Darfur from the side of Western Sudan was always in the news. So this question, we know this statement is, this option is incorrect. Question asks how many of the pairs given above are correctly matched. We know 1 and 2 is correctly matched. That means answer has to be B, only 2 pairs.
Moving ahead, question number 38. This says that consider the following statement. The question is simply asking, Yogasana will be included as a medal event for the first time in 2026 Asian Games. Now, there is just a little bit trick with this question, and why I am highlighting or underlining these kind of questions. Why? Because yes, we know that Yogasana will be included for the first time in 2026 Asian Games, but not as a medal event, but rather a demonstration event. So, based on this thing, we know statement 1 is incorrect. 1 is here, 1 is here, 1 is here. So, without wasting our time or having a look toward these two options, we got the answer. But still, just for the information, second says that cricket will be included as a medal event for the first time in 2028 Olympic Games. So, I understand that yes, all the cricket lovers must have understood that the statement 2 is definitely incorrect. The reason being that in 1900 Paris Olympics, it was the very first time in the history that a cricket match between Great Britain and France took place. It was a 2-day, 2-innings match where Britain defeated France and got the Olympic gold medal for the part, right? So this is definitely incorrect. Third statement, hockey will be excluded. Again the word excluded from the 2026 Commonwealth Games for the first time since its inclusion. So we know that hockey was included in 1998 as a part of the Commonwealth Games. And this time it has been decided to exclude hockey from the Commonwealth Games onwards 2026. Right? So this statement is correct. Right? The point that you need to understand is, although this is a very factual information, but if you are just going with the current aspect, you know, we have eliminated option 1. We have already got the answer. So answer will be C. Question number 3. Let's moving ahead. Question number 39. It says that statement 1, the Arab League has recently reinstated Syria's membership. Again, for the point of IR, you know that in 2011, the Arab League ousted Syria from its membership based on the crackdown that was done by Assad's regime against the pro-democracy protest. Now this is the time when they have thought in this manner to reinstate the Syria into the Arab League. So statement 1 is definitely correct. Now say statement 2, the western sanctions against Syria have been lifted. Again, if you just simply following the news, you know that there are so many things taking place in Syria at this moment. The president has fled away the country. Certain groups are there. More and more international countries, or I would say the groups, are having their legs in the country itself. So perhaps this is definitely not the right time for any of the country or the Western people, I would say the Western countries, to lift the sections. So in general, I would say that the statement 2 does not hold this accountability. So in general, statement 2 is definitely incorrect, but although yes, this is incorrect. So going with the options, they are calling the following is correct in respect to the above statement. We know statement 2 is incorrect. Statement 2 is incorrect. So the answer will be C. Moving ahead, question number 40. Consider the following information. This question is talking about the agencies established by and the nodal ministry. So it says the Central Bureau of Investigation, which is the executive resolution. If you people just know that CBI was inducted because of Delhi Special Police Establishment Act. It was not a executive resolution, but rather it was a Delhi Special Police Establishment Act 1946. Even the Minister of Home Affairs is not the nodal ministry, I would say, but rather Ministry of Personal Public Grievance is the one who is the nodal ministry. So statement 1, or I would say the option 1 is definitely incorrect. Eliminate 1. Now we are left with 3 only and 2 and 3 only. That means 3 is definitely correct. Without having a look towards the 3, we know that 3 is definitely correct. Going with the 2, the Enforcement Directorate
it says that it was established by the Parliament Act, but rather it was a executive resolution. It was a executive resolution, not a Parliament Act. So based on this thing, statement 2 is definitely incorrect. So the answer will be C. Moving ahead to the next question. The question says, consider the following statement. Statement 1, PM Vidya Lakshmi Karyakram aims to provide a single window platform for students to access education loans and scholarships. Now, let's deep dive a little bit in the history. Mr. Arun Jaitley Sahab, during the 2015-2016 budget, focused a lot of concern regarding the future of the students per se. Right from that moment, you have been witnessing that the government of India has been consistently trying to make sure that the education will be imparted within the structure of the students or within the layers of the students. And yes, with this view, this Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram has been launched by the government of India, which aims to provide single window platform for students to access education loans and scholarships. More about this thing, it is being guided by Ministry of Finance, Ministry of Education and Indian Banks Association. This is the additional knowledge. One more very specific thing, that the loans under this Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram is being allotted or is being given to all different layer of the income groups or income family groups of the India. But if any of the student has been a part of the earlier schemes of the government of India, they will not be registered under this scheme. So this is the lacuna. Another additional information regarding this PM Vidya Lakshmi Karyakram is that this scheme is applicable to all the commercial banks, the RRBs, the regional rural banks and the cooperative banks as well. So this is the additional information that you people need to have into your domain, right? There might be a statement based kind of question that can be asked by the UPSC in prelims examination. One more additional information, that this loan facility will be available to all those students who will be taking admission in 860 higher education institutions based on the NIRF rankings. This is additional information. Now, so this statement is definitely correct. So we can eliminate 2 only and neither. Statement 2, Vigyan Dhara is an initiative under the Ministry of Education to promote no detention policy till class 8. Although no detention policy was in news, but definitely Vigyan Dhara, again I would say this statement is a very general statement. Any of the student who must be having a look or having the interest in the current affairs must have understood that no detention policy was in news, and the government of India is trying to convey that all the students get failed in either 5th and the 8th class. But this Vigyan Dhara, on the other hand, is majorly about developing a scientific understanding, creating an ecosystem, right? So this is definitely not linked with the no detention policy. Statement 2 is definitely incorrect. So the answer, they are asking about the correct statement. So the answer has to be A, 1 only. Move to another question, that is question number 84. The question number 84 says that consider the following statements with reference to the Indian Antarctic programs. First statement, the Indian Antarctic program is implemented by Ministry of Earth Science. It's a very factual statement, yes. Ministry of Earth Science is the one, Ministry of Earth Science is the one who has been implemented, this Antarctic program has been implemented by Ministry of Earth program. This is a correct statement. 2. Dakshini Gangotri is the latest research station established by India in Antarctica. You know, this Dakshini Gangotri was submerged, right, way back perhaps in 1998 and 1919. And based on those things, the government abandoned this Dakshini Gangotri station. Then after that, there are 2 major stations that has been established by the government of India, right? The first being Maitri, and the second one is Bharti. And Bharti was inducted perhaps in 2012. So Bharti, as per this knowledge, is the latest one.
but Dakshini Bharat was the first one, not the latest one. So statement 2 is incorrect. Statement 2 is incorrect. We have eliminated this option. Now again with going with 3 only, 1 and 3. We know statement 1 is correct. We have got the answer. See, even without knowing the statement 3 is correct or not, we have got the answer. But still, the Indian Antarctic Act 2022 gives Indian courts jurisdiction over crimes in Antarctica involving Indian citizens or foreigners or Indian expeditions. This is a very correct statement because recently this has been passed, right? So statement 3 is correct. So answer will be C, 1 and 3. Moving ahead to the next question, question number 85. Consider the following statements. The Quad Cancer Moonshoot Initiative. Quad, there are 4 members, right? There are 4 members in the Quad, right? Aims to address the problem of cervical cancer. Problem of cervical cancer in the Indo-Pacific through improved access to HPV vaccination, screening and treatment. Again, just a very normal understanding that the cervical cancer in the Indo-Pacific region has become a 3rd leading cause of cancer-related death among the women. That is why there has been a lot of concerns regarding the or treatment regarding the or even the pre-detection regarding the cervical cancer. Why? Because it has been detected at the pre-stage, it can cure. That is why the statement 1 is definitely correct. And yes, it was a Quad center, this Quad Cancer Moonshoot Initiative. Second statement, according to World Health Organization, HPV vaccination is generally recommended for individuals after the age of 15 years. In a very general part, the vaccination can be started just after attaining the age 9 years. This is a very general point, right? Especially if I talk about this HPV vaccination, that we know that it can be started after 11 or 12 years. But under this Moonshot Initiative, or I would say, or HPV vaccination with this Quad Cancer Moonshot Initiative has been linked that they are considering to giving it to the adolescent girls. That means girls within the age bracket of 9 to 14 years, right? So all these 3 information shows that statement 2 is definitely incorrect. So we know the which of the following statement above is are correct. So the answer has to be A1 only. Deep down to question number 86. Question number 86 says that in the context of recent developments regarding unified pension scheme, consider the following statements. Okay. First, under the old pension scheme, the employees had no deductions from their salaries for contributing to a pension fund. If you know that this old pension fund, right, this is a very general statement that there was no deduction as per took place and this pension was unfunded. This pension was unfunded. That means there was no corpus as such from which the government of India can give you the pension. So ultimately it depends upon your contribution, right? So yes, statement 1 is correct. Statement 2, under the new pension scheme, contribution to the pension account comes solely from the employee. Statement is incorrect, factually wrong. Why? Because the government says that the minimum or I would say minimum 10%, right, of your basic or tier 2 or in a layer 2, it depends upon how much amount of money you need to donate to NPS, and based on that amount, the equal, right, the government says that I'll bear the equal percentage, or the not the percentage but the weightage, or the equal amount of money, right? So statement 2 is definitely incorrect because in the pension scheme, again in NPS, it is both me as a person and the government as a contributor as well. Statement 2 is incorrect. Statement 3, under the unified pension scheme,
both employees and the government will contribute to the pension account. Yes, in unified the government says that again minimum is 10% of your basic and the government will provide 18.5% of the amount, right? So that or 18.5% if I go of your salary. So this statement 3 is definitely correct. One more thing that you need to understand, that UPS is not a unfunded, not unfunded unlike OPS. That's the additional information. So we know statement 3 is definitely correct. Question asks which of the statements given above are correct. So we know that based on this thing, 2 is incorrect, 2 is here, 2 is here, we have eliminated both. Now 1 and 3 are correct, 1 and 3 are correct, answer will be B. So these were all those questions from the side of me, Shashank Sharma, with respect to the IR and miscellaneous sections. Keep studying. Thank you very much. Hello everyone, I hope you have performed well in your ANUBHAV test. In this section, we will be discussing the geography question of the ANUBHAV test. So let's start with our discussion. The first question of geography is question 42. It's an assertion reason type question. The first statement says, winds blowing from land to ocean increase the temperature of coastal water. So first of all, it's a question from the topic Oceanography. Oceanography, right? Oceanography is an important topic from prelims exam point of view. On and off 1 to 2 questions are asked from this topic every year, okay? And if you see, this question is about distribution of temperature. Distribution of temperature in ocean water, right? And if you analyze the trend of previous year question from the topic of oceanography, UPSC has been focusing on 2 areas within this topic. First is distribution of temperature and second is ocean currents, right? So that's why a question based on distribution of temperature has been put in your test, right? Now let's read the statement. First statement says, winds blowing from land to ocean increase the temperature of coastal waters. Second statement says, offshore winds lead to upwelling of water, right? So it is basically based on the concept of impact of prevailing winds on the ocean temperature, okay? So let's first understand the concept and then we will come back to the question, okay? So when it comes to distribution of temperature in ocean water, right, there are 2 types of distribution. First is vertical distribution and second is horizontal distribution, right? So if we discuss the vertical distribution of temperature in ocean water, it's very simple actually. Let's say this is an ocean profile. So the water near the surface, this will be the warmest, will have the maximum temperature, and as you go down deep into the ocean, the temperature will keep decreasing, right? So surface water will be the warmest water and deeper water will be colder. So vertical distribution of temperature in ocean water, it's simple, pretty much simple, right? But when it comes to horizontal distribution of temperature in ocean water, this is not as simple as vertical distribution. It actually depends on multiple factors, and prevailing winds is one of the factor which impact the horizontal distribution of temperature in ocean water, and our question is based on this factor only, right? So let's first understand the impact of prevailing wind on horizontal distribution of temperature in ocean water. So let's say this is a land mass, right?
and there is a wind blowing from land to ocean, right? Such a wind is called offshore wind. Winds blowing from land to ocean is called offshore wind because it moves away from the shore or the coast, right? So what happens that when a offshore wind blows from land to ocean, what it does that it displaces the water near the coast. So these waters will be blown away from the coast by this wind, right? So that means a void will be created here because of displacement of the surface water, right? And in order to fill this void, water from below the surface will rush upward and replace this void, fill this void basically, right? So overall what is happening that offshore wind is replacing the surface water which is being basically filled by the water from below the surface, right? Now we have already seen in the vertical distribution that surface water is warmer, right? And as you go deep down, right, the water which is below the surface will be colder as compared to surface water. So here what is happening is surface water is moving away from the coast, that means warmer water is moving away, and water from below the surface which is colder is coming up near the coast, that means warmer water is moving away and colder water is coming near the coast. So overall impact or overall result will be that temperature of the coastal water will decrease, right, because warmer water is being replaced by the colder water, right. Now let's read our question once again. The first statement says winds blowing from land to ocean increase the temperature of coastal water. So this is not correct. This will actually decrease the temperature, not increase, right. Now let's see the second statement. It says offshore winds. Offshore winds means winds blowing from land to ocean lead to upwelling of water. This is a correct statement. Let's see how. So as we have discussed just now, that offshore winds will move away the coastal water, surface water, and that will be filled by, the void will be filled by water from below the surface. So this phenomena is called upwelling. Upwelling. Upwelling in simple term means that water from below the surface is moving upward, right. So offshore wind is causing upwelling, right, and that's the reason temperature is decreasing, right. So in our question, first statement is incorrect, second is correct. So the correct answer here will be D, right. Now let's move on to the next question, that is question 43. It says consider the following vegetation species, right. So this is a question from the topic vegetation of India. Vegetation of India, right. This is a very important topic in Indian geography, and if you see the previous year question, almost one question is asked almost every year from this topic, right. 1 to 2 questions are asked almost every year from this topic. So that means this topic is important from exam point of view, right. Now let's read the question. Consider the following vegetation species: blue pine, rhododendrons, sal. As one ascends from the foothills to higher altitudes in the western Himalayas on the Indian side, which of the following is the most likely sequence of appearance of these species? So some species are given and the question is asking which will be the correct sequence of their appearance if we move from foothills to higher altitude in western Himalaya, right. So before we discuss this question, so that basically this is a question based on Himalayan vegetation, which is also called montane vegetation, right. Vegetation which is found in mountains are called montane vegetation, right. So before we discuss this question, we will understand one basic concept in climatology and vegetation, right.
So that says altitude, which means height, mimics latitude. This is a fundamental principle which is applicable when it comes to the distribution of climatic zone and vegetation, right? And what it means exactly, let's understand it further. So let's say this is our equator and this is a landmass, right? So near the equator on the landmass, for now we are talking horizontal distribution, we are not talking on mountain, right? We will understand that further. So if we see near the equator, the type of vegetation will be tropical. Then the next band will be that of temperate. Then the next band will be coniferous. That will be followed by shrubs, and the next band will be lichens and mosses, and the upper part which is near to the pole, this will be basically snow covered, right? So this is the distribution as we move along the latitude from equator to pole, right? So now this is the distribution along the latitude, right? Now the principle says that altitude mimics latitude in terms of distribution of vegetation. So what it means that, let's say this is a mountain, right? So the bottom zone of the mountain will be having tropical vegetation. The next band will be occupied by temperate vegetation, right? Then will be coniferous, right? Then shrubs, then lichens and mosses, and the upper part will be covered by snow, right? So if you see, the distribution along the latitude is almost similar to that along the height, right? So this is what is meant by altitude mimicking latitude, right? Now let's see our question. Three species are given. First is blue pine, then rhododendron, then sal, right? So let's see where they will lie. So first species, blue pine. Pine is basically any type of pine, whether it is blue pine, cheer pine. Pine is basically a coniferous forest. Rhododendron is basically a species of shrubs, right? It is basically a shrub species and it has red flowers. That's why it is also called red tree. Sal is basically a tropical kind of forest. So let's place them along the height of our mountain, right? So we saw that blue pine is a coniferous forest, so that means blue pine will lie in this zone. Then there was rhododendron. So rhododendron is a shrub species, so rhododendrons will lie here. Then the third was sal, which is a tropical forest, so that will lie in the tropical zone. So correct order of appearance as we move from foothills to higher altitude is sal followed by blue pine followed by rhododendron. So let's see our question. So sal is basically third, then that will be followed by blue pine, and then it will be followed by rhododendron, right? Sal, first of all sal will appear, then blue pine, and then rhododendron, right? So sal is third, then blue pine first, rhododendron second. So the correct answer here will be 312B, right? Now let's move on to the next question, that is question 42. It says, in the context of Physiography of India, so basically it's a question from
Physiographic division of India. Physiographic divisions of India. Okay. So physiographic divisions of India is again a very important topic from prelims exam point of view. If you analyze the previous year questions, almost 1 to 2 questions is asked every year from this topic, right? So and if you analyze the previous year question thoroughly, you will find that UPSC has been focusing on peninsular hills, peaks and plateaus. The recent prelims year questions has been focusing on peninsular hills, peaks and plateaus, right? So within this topic, this area becomes more important, right? So that's why there is a question based on peninsular hills here, right? So let's read the question. The first question says, Anaimuli peak is located where Cardamom, Anaimalai and Palani hills meet. Then Doda Beta peak is located where Nilgiri and Nallamalla hills meet. Then Agasthyamala peak is located where Agasthyamallai and Erramala hills meet, right? So in order to understand this question better, let's first see the placement of all these hills and peaks, and then we will come back to our question. So if we draw a rough map of India, right, this is a rough map of peninsular India. So if you see, Erramala is located somewhere here, Erramala, then just right to this Nallamala is located, Nallamala. Both of these are located in Andhra Pradesh, right? Then Nilgiris is located somewhere here, Nilgiri hills. It basically spreads around the border areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, right? Then Anaimalai hills is located somewhere here. This will be followed by Cardamom hills. So this is Anaimalai. This is Cardamom hills, and Palani hills is located something like this, right? Now let's read our question once again. First statement, Anaimuli peak is located where Cardamom, Anaimalai and Palani hills meet, right? So this is a correct statement. Anaimuli peak is located on Anaimalai hills, and it is located where Anaimalai, Cardamom and Palani hills meet, right? So this is Anaimuli peak, Anaimuli peak, right? And this is the highest peak of Peninsular Plateau, right? So basically our first statement becomes correct. Now let's see the second statement. It says Doda Beta peak is located where Nilgiri and Nallamalla hills meet. Let's see if it is correct or not. Doda Beta peak is a peak on Nilgiri, and in fact this is the highest peak of Nilgiri. Doda Beta is the highest peak of Nilgiri, and it is the second highest peak of Peninsular Plateau, right? But the statement says Doda Beta peak is located where Nilgiri and Nallamalla hills meet, right? But this is not correct, right? Because if you see, Nilgiri is located here in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu area, and Nallamalla hills is located in Andhra Pradesh. So these two hills can't meet, right? So you could have eliminated this option just by logic if you had the fair idea of placement of these hills. So this statement is not correct. Now let's see the third statement. Agasthyamala peak is located where Agasthyamallai and Erramala hills meet, right? So Agasthyamala basically is, Agasthyamallai is a hill located here, somewhere here in Kerala and Tamil Nadu border area. This is Agasthyamallai,
Agastyamalai hill, right? And there is a peak Agasthyamala located on this hill, Agasthyamala, right? The statement says Agasthyamala peak is located where Agastyamalai and Eramala hills meet. Now if you see, Agasthyamala hills is located here in Kerala and Tamil Nadu border area, and Eramala hill is located in Andhra Pradesh. So again, if you see, these two hills can't meet. So although Agasthyamala peak is located on Agastyamalai hills, it is not at the meeting point of Eramala and Agastyamalai, right? So third statement also becomes wrong, right? So correct answer here will be A, 1 only, right? So you can see that though these questions appear very tough at the first glance, they are actually not. All you need to have is a fair idea of placement of important geographical features, right? And if you have that fair idea, you can eliminate most of the wrong statements, right? Now let's see the second next question, that is question 45. It says which of the following countries are currently ranked as 2 largest producers of lithium in the world, right? So this is a question based on distribution of resources. Distribution of resources. This again is an important topic from prelims exam point of view. Almost 1 to 2 question is asked every year from this area, right? And if you analyze the previous year question, in the recent past, UPSC has been focusing on critical minerals, right? So UPSC has been asking the top producer of critical minerals or their distribution, right? And lithium, if you say, is a critical mineral, especially for India, and that's why this question has been put in your test. So if you see the top 3 producer of lithium, are first is Australia, second is Chile, and third is China, right? The question is asking the 2 largest, so that will be Australia and Chile. So B is the correct answer here, right? Now there is one concept related to this lithium, that is basically lithium triangle. You should know about this, right? So lithium triangle is basically an area in South America, right? So this is South America, and if you see, this is Chile, this is Argentina, this is Chile, and this is Bolivia. So lithium triangle is basically an area located across the border of these 3 countries. It's a roughly a triangular shaped area, and this is important because this area supplies almost 75% of lithium in the world, right? So this is one important fact that you should know, right? Now let's move on to the next question, that is question 46. It says in the context of geomorphic processes, right? So this is basically a question based on geomorphology. This is again a very important topic from prelims exam point of view. If you see, 1 to 2 questions are asked on and off almost every year from this topic, right? And within this topic, if you analyze the previous year trend, right, UPSC has been focusing on 2 areas. First is exogenic forces, and second is endogenic forces. So what is exogenic forces? Exogenic forces are basically those forces which are external to Earth and keep bringing changes on the land surface. So among these exogenic forces, weathering and erosion are
prominent ones, right? What are endogenic forces? Endogenic forces are basically forces that are internal to earth and which keep bringing changes on the land surface. So among endogenic forces, volcanism and earthquake are prominent ones, right? And if you analyze the trend of previous year question from the topic of geomorphology, UPSC has been pretty much focusing on these 4 areas only, right? So that's why a question based on weathering has been put in your test. Now let's read the question. The first statement says weathering helps in making mineral extraction economically viable. Second statement, weathering leads to leaching of some materials, right? So let's see if it is correct or not. So first of all, we will understand what is weathering. Weathering in very simple term is basically disintegration and decomposition of rocks, right? So let's say there is a rock and it gets disintegrated and decomposed into smaller pieces by forces like air, water, etc. So this is what is called weathering, right? So when a rock is weathered, its particles gets loosened, right? It will be basically decomposed into smaller particles, right? And then what happens that, let's say water is flowing from upward, so it will pick a smaller rock particle which is already weathered and it will move it down, right? So this is what is called leaching. When water, when any matter moves downward along with water or other forces, this is what is called leaching, right? Likewise, let's say this is another rock particle and air is moving this side, so it may blow away this particle away from this decomposition side, right? So once the rock is weathered, particles are loosened, right? And some of the material, loosened particles, may be moved away from the decomposition side by water, air and other forces, right? So that means some matter will be moved away and only some matter will be remaining here, right? So what happens that not so valuable materials are moved away by the forces like water and air, and valuable materials such as minerals, they stay at the place of decomposition, right? So as a result, what happens that concentration of these material increases, right? Because unwanted or not so valuable materials has been moved away and only valuable materials remain at the place, so their concentration increases, right? And this is what makes mineral extraction economically viable, right? So in order for a mineral extraction process to become economically viable, the concentration of mineral has to be sufficient enough, right? If concentration of mineral at a place is not high enough, extraction will be not economically viable, right? So this is what is underlying concept of the question. Now let's read the statements once again. Weathering helps in making mineral extraction economically viable. This is a correct statement. Statement 2, weathering leads to leaching of some material. This is also correct. We saw that weathering will loosen the particles which will then be leached by forces like water and air, right? So that means both the statement is correct, and statement 2 explains statement 1, right? It is because of leaching of some materials that concentration of valuable material increases, and that's why mineral extraction becomes economically viable, right? So the correct answer here will be A. Both the statements are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1, right? Now let's see the next question, that is question 47. It says, in the given map, which one of the following pairs of ocean current are shown,
right? So this again is a question based on oceanography, right? And as we discussed just now, within this topic of oceanography, the two focus areas of UPSC have been distribution of temperature, a question based on that we have already discussed just now, and second important area is ocean current. So this is a question based on ocean current, right? Here a map is given. This is basically, you see, South America, and there is a current on the western side, and there is another current on the eastern coast of South America, right? So this is a pretty simple question actually. Current flowing on the western coast of South America is called Peru current. This is also called Humboldt current because it was discovered by a scientist, German scientist named Humboldt, right? So this is basically Peru current or Humboldt current, and this current that is flowing on the eastern coast of South America is basically Falkland current, right? These two are cold currents. So the correct answer here will be Humboldt and Falkland. B is the correct answer here, right? Now, so basically the learning that you should draw from this question is that you should have idea about the major currents of the world, right? Now, let's see the next question, that is question 42. It says consider the following statements regarding different non-chemical fertilizers, right? So this is a question from the topic agriculture, right? Agriculture is a very important topic in Indian geography, and if you analyze the trend of previous year question, almost 2 questions have been asked from this topic every year in the recent past, right? And within this, if you analyze the previous year question, UPSC has been focusing on the area sustainable agriculture, right? So that's why a question based on non-chemical fertilizer has been put in your test, right? Recently, if you see, Government of India has been also promoting the use of non-chemical fertilizer, right? So this question becomes important that way also, right? Now let's read the statements. The first statement says biofertilizers are live microbial products that do not contain any nutrients, right? This is a correct statement. Let's see how. So biofertilizers in very simple terms is basically formulates of live microorganisms, right? So basically live microorganisms are packed in the form of formulates, and that is what is called biofertilizer, right? So what happens that when you apply this biofertilizer to soil, these live microorganisms, they perform certain biological activities, and that those activities lead to increase in nutrient content in the soil, right? So biofertilizers as such do not contain any nutrients. It is the biological activity of these live microorganisms that lead to increase in nutrient content in the soil. So this is a correct statement. Now let's see the second statement. This is vermicompost contain organic matter decomposed by earthworms. This again is a correct statement. Vermicompost is nothing but decomposed organic material which are decomposed by earthworms. So let's say there is a compost, some organic materials such as cow dung, wasted plants, wasted food, etc. are put in the compost, and earthworms are put in the same compost. These earthworms decompose these organic material, and what is left after decomposition is called vermicompost, right? So this vermicompost is then applied to soil and it acts like an organic fertilizer, right?
So this is a correct statement. Now let's see the third statement. Green manure primarily contains organic matter decomposed by microorganism, right? So this is not correct. Green manure, if you see, green manure is basically green leaves and plants, right? In very simple terms, green leaves and plants. So basically plant leaves are collected, or some complete plants are collected, and they are directly applied to the soil, right? Undecomposed, in undecomposed state, right? Their decomposition takes place once they are applied to soil. So green manure is basically undecomposed when they are being applied to soil, right? And that's why in fact they are called green manure. So this statement primarily contains organic matter decomposed is not correct. They are basically undecomposed, right? So the third statement is not correct. Correct answer here will be 1 and 2 only, C, right? C is the correct answer here. Now let's see the next question, that is question 88. It says how many of the following rivers. So this is a question based on drainage system of India. Drainage system of India, right? This is a very important topic again in Indian geography. If you analyze the previous year trend, one question is for sure in every year, right? And the previous year question trend suggests that UPSC has been focusing on major rivers, their tributaries and their origin, right? So that's why a question based on important tributaries and their origin has been put here. So let's read the question. How many of the following rivers originate outside India but flow throughout the Indian territory? And some names of some rivers are given, that is Gandak, Ghaghra, Kosi, Ramganga, Tista. And if you see, these four are tributaries of Ganga, and this is a tributary of Brahmaputra, right? So in order to understand this question better, let's draw a rough map of India and we will see how, from where they are originating and how they flow, right? So let's say this is roughly the map of India, right? And if you see, Ganga originates somewhere near here in Uttarakhand and it flows something like this, right? Now let's see the rivers given. First is Gandak river, right? So Gandak basically originates in Nepal Himalayas somewhere near here. It flows like this and it meets Ganga in Bihar, right? Then, so that means Gandak is originating outside India. This is correct. Next river is Ghaghra. Ghaghra originates in Tibet, somewhere near here, and it again meets Ganga in Bihar. So this originates in a glacier called Mapcha Chango, Tibet. This is in Nepal, right? So this again is originating outside India. Now the next river is Kosi. So if you see, Kosi originates in Tibet, somewhere near here, and it again flows like this and meets Ganga in Bihar. So Kosi again is originating in Tibet, that means outside India. So this is also correct. Ramganga is also a tributary of Ganga. It originates in Garhwal hills in Uttarakhand, somewhere near the origin of Ganga. It flows like this and meets Ganga in UP, right? So Ramganga does not originate outside India. Next river is Tista. Tista originates in Sikkim Himalaya, somewhere near here. It flows through India and then Bangladesh, and then it meets Brahmaputra river, right? So Tista is not originating outside India. That means only three rivers, Gandak, Ghaghra and Kosi, are originating outside India. So the correct answer here will be only 3, B, right? Now the learning that you should draw from this question is that when you are studying the rivers of India, you should use maps and diagrams.
maps and diagrams, right? If you use maps and diagrams, it will be very easy for you to study the rivers, their origin, flow, tributary and all the information, right? Without using maps and diagrams, if you read them only in textual format, it will be very hard for you to memorize those information and retain. If you use map, it will be very easy for you to memorize and retain for longer time, right? Now, let's move on to our next question, that is question 89. It says in the context of physiography of India. So this again is a question based on physiographic division of India. We have already seen that this is an important topic in Indian geography, right? So consider the following statements. First statement says Satpura range forms the northernmost boundary of Deccan Plateau. Then second statement says Aravalli range forms the westernmost boundary of the Central Highlands, right? Third statement says Cardamom Hills form the southernmost boundary of the Peninsular Plateau, right? So this is a question again based on Peninsular Plateau and hills, right? So in order to understand this question better, let's first see the placement of these geographical features, right? So if we draw a rough map of peninsular India, it is something like this, right? And Peninsular Plateau is basically a triangular plateau which is placed something like this, right? This is Peninsular Plateau, right? This is basically located south of the Gangetic Plain and it's a roughly a triangular shaped of plateau. Now, if you divide this Peninsular Plateau on a broader level, this is divided into two parts. First part is this one, the upper part. This is called Central Highlands, and this lower part, this one is called Deccan Plateau. So both these Central Highlands and Deccan Plateau are basically constituent of Peninsular Plateau, right? Now if you see, this Central Highland is bounded by Aravalli range here in the west. So westernmost boundary of Central Highland is Aravalli range. In the eastern side, this is bounded by Rajmahal Hills, which is placed like this, right? And if you see the Deccan Plateau, this is bounded by Western Ghat on the western side, and on the eastern side, this is bounded by Eastern Ghat, right? And if you see, there is a hill here, Cardamom Hill, which is a part of Western Ghat only. This form Cardamom Hills. This Cardamom Hills forms the southernmost boundary of Deccan Plateau, right? And one more fact that you need to know is that these Central Highland and Deccan Plateau are basically separated by Narmada River. Narmada River flows something like this. This is Narmada River. Narmada River flows in a rift valley located between Central Highland and Deccan Plateau, right? And just beneath the Narmada River, there is a range, mountain basically, that is called Satpura range. So this Satpura range basically forms the northernmost boundary of Deccan Plateau, right? So this is pretty much the location of the given geographical features. Now let's read the statements. First statement says Satpura range forms the northernmost boundary of the Deccan Plateau. This is correct. As we discussed just now, Satpura range located here is the northernmost boundary of Deccan Plateau. Second statement, Aravalli range forms the westernmost boundary of the Central Highlands. This again is correct. As we have discussed, Central Highland is bounded on the western side by Aravalli range, right? So second statement is also correct. Third statement, Cardamom Hills form the southernmost boundary of the Peninsular Plateau. This is also correct. We have seen that Cardamom Hills form the southernmost boundary of Deccan Plateau,
right? So that means this will also form the southernmost boundary of Peninsular Plateau, right? So third statement is also correct. So correct answer here will be D, 1, 2 and 3, right? So this again, if you see, although it looks very tough at the first glance, but all you need to have is a fair idea of the placement of important geographical features, right? If you have that idea, you can be able to approach such questions very easily. They are not very tough actually, right? Now let's see the next question, that is question 90. It says, with reference to edible oil production in India, consider the following statement. So this again is a question from the topic agriculture, right? So within this topic agriculture, crops, certain crops are asked very often by the UPSC in the prelims examination. And if you see, Government of India has recently launched National Mission on Oilseeds. So in that context also this question become very important, right? Now let's see the statements. The first statement says, soybean is primarily cultivated as Rabi crop. This is not correct. Soybean is primarily a Kharif crop, right? And this is in fact a rain-fed crop, which is cultivated after the arrival of monsoon in the Kharif season, right? Though in some areas soybean is cultivated in Rabi season as well, but its primary cultivation takes place in the Kharif season. So first statement is not correct. Now let's read the second statement. Palm oil alone accounts for more than half of India's vegetable oil imports, right? This is a correct statement. India, if you see, India is the world's largest importer of vegetable oils, right? India is the world's largest importer of vegetable oil, right? And within this import of vegetable oil, palm oil alone accounts for almost 60%, right? So out of the total vegetable oil imports, palm oil import accounts for almost 60%. So that means this statement is correct, right? Now let's see the third statement. Kharif oilseed crops contribute more than half of India's total oilseed production. This is also a correct statement. If you see the breakup of oilseed production in India in terms of seasons, right? Kharif oilseed crops contribute almost 60%. Then Rabi oilseed crops, they account for 34%, and then the rest 2 to 3% are Zaid oilseed crops, right? So Kharif oilseed crops are, most of the oilseed crops are mainly cultivated in Kharif season, right? So third statement is also correct. Which of the statements given are correct? So all 2 and 3 is correct. So the correct answer here will be C, right? Now let's see the next statement. It's next question. This is question 91. It says Strait of Gibraltar connects. So this is a question based on places in news. Places in news based question is very frequent in the UPSC Prelims examination, right? So you should know all the important places that has been in news in the recent past, right? And Gibraltar has been in news because the United Kingdom has been asserting its sovereignty over this Gibraltar, right? So this correct answer here is the Gibraltar Strait connects Atlantic Ocean and Mediterranean Sea, right? If you see its placement on the world map, let's say this is Africa, and this is Eurasia, right? So this is Mediterranean Sea and this is Atlantic Ocean, right? And Gibraltar Strait sits here, right? This connects Mediterranean Sea with Atlantic Ocean, right? So this is the correct answer.
one more related thing that you should know. This is Mediterranean Sea and this is Red Sea, and there is a canal called Suez Canal which connects Mediterranean Sea with Red Sea, right? Now let's move on to the next question, that is question 92. It says meteorites falling towards Earth survive the exosphere and the thermosphere but generally burn up in the mesosphere. Which of the following best explains this phenomena, right? So this is basically a question you can say based on space objects, right? Such type of questions are also asked by UPSC sometimes, right? So first of all, let's understand what is meteorite. Meteorites are basically rocks particle falling from the outer space towards the Earth, right? Now let's understand the Earth atmosphere in brief. So if you see, this is troposphere, this is stratosphere, this is mesosphere, right? Then there will be thermosphere, and then upper part is exosphere. So let's say there is a meteorite that is falling towards Earth, right? So when it is falling through outer space, there is no gas in the outer space because it is completely vacuum, right? So it falls safely through the outer space, right, without any friction. When it enters into exosphere, right, the density of gases in exosphere is very low so as to cause significant friction, right? So that means low density of gases in the exosphere does not cause much of friction. Same is the case in thermosphere, right? There is not much gases in the thermosphere and that's why friction caused by them is not significant. But when meteorites come to the mesosphere, the density of gases here is sufficient enough to cause significant friction, and because of that friction heat gets generated and that burns up the meteorite, right? So this burning meteorite is called shooting star or meteors, right? So basically the meteorite is able to survive exosphere and thermosphere because of low density of gases but get burnt up in the mesosphere because of high density of gases, right? So if we see our question here, the correct answer will be C. Higher gas density in the mesosphere creates friction generating heat that burns meteors, right? This is the correct answer. Now let's move on to our next question, that is question 93. Which of the following are likely to occur on December 22nd, right? So this is a question from the topic climatology, and if you see within this topic, this is based on the concept of equinox and solstice. If you observe the previous year question from this topic climatology, UPSC has been asking question based on the concept of equinox and solstice very often, right? And particularly the concept based on the position of Sun and Earth on 21st June has been asked 4 to 5 times in the last 6-7 years, right? And that's why this question has been put in your test. So let's first see the position of Earth and Sun as it revolves around the Sun, right? So Sun is situated at the center and Earth revolves around the Sun in an elliptical path. And on this elliptical path, there are 4 places or 4 positions you can say which are of prime importance. They are these places. This is the situation on 22nd December. This is 21st March. This is 21st June and this is 23rd September, right? So Earth is moving like this
these 4 positions hold some special significance because of orientation of Earth toward the Sun, right? So if you see, out of these 4 positions, these 2 positions, 21st March and 23rd September, all are called equinox, right? Equinox because in these positions the Sun is directly overhead the equator, right? And both the hemispheres get equal amount of sunlight, so days and nights are almost equal in both the hemisphere, and that's why this word equinox, which means equal day and night. Now let's see what is the position on 22nd December. On 22nd December, what happens that this is Earth and this is the axis of Earth, right? So if I draw it here bigger, so let's say this is Sun, this is Earth, right? And this is the position. So here the south pole is tilted towards Earth and north pole is tilted away from the Earth, right? This is equator, this is Tropic of Capricorn, and this is Capricorn, this is Tropic of Cancer, and this is equator. This is the position on 22nd December, right? So if you see, south pole is tilted towards Sun, right? So that means Tropic of Capricorn is towards Sun, and in this position what happens that Sun rays reach to Tropic of Capricorn directly, right? Directly means it will appear like reaching at 90-degree angle. But for Tropic of Cancer, this is at the farthest from the Sun on this date, so Sun rays will appear in a slant manner, right? So let's say if we draw these places on a flat surface, so let's say this is a place on Tropic of Capricorn, so this will receive sunlight directly from overhead, so it will appear as if Sun is at the highest point in the sky for Tropic of Capricorn, right? What is the case at Tropic of Cancer? For this, Sun rays will appear coming like this at an angle, right? So for a place on Tropic of Cancer, Sun will appear at its lowest height, right? So this is what happens on the 22nd December, right? Now let's see the question. The first statement says the Sun is at its lowest point in the sky for every location north of the Tropic of Cancer. This is correct, as we have discussed just now. Tropic of Cancer and all the places beyond Tropic of Cancer will receive sun rays at a slant angle, right? Like this. So it will appear that Sun is at its lowest point in the sky, right? Now let's see the second statement. It says south pole is tilted towards Sun. This is correct. We have seen that on 22nd December, south pole will be tilted towards Sun and north pole will be away from the Sun, right? So second statement is also correct. Third statement, Tahiti and Darwin experience the shortest day of the year. This is not correct, and though this statement looks very tough, it is actually not. What happens that if you see, the south pole is tilted towards Sun on 22nd December, that means all the places in southern hemisphere will get maximum sunlight on this date, right? So on this date, all the places in southern hemisphere will have longest day of year, right? And if you see, Tahiti and Darwin are located in the southern hemisphere. So let's say this is South America, this is Africa, and this is Australia, and this is equator, right? Darwin is located here and Tahiti is located here, right? So they are located in southern hemisphere. Tahiti and Darwin are very famous in geography because pressure for calculating Southern Ocean Oscillation Index is calculated at these two stations, right? So by writing Tahiti and Darwin
it means that any place in southern hemisphere, right? Southern hemisphere. Tahiti or Darwin are just mentioned here, but it could have been also written any place in the southern hemisphere will have longest shortest day of the year, right? So this is not correct, it will be basically longest day. So that means the correct answer here is 1 and 2 only, A, right? Now let's see the next question, that is 94. It says consider the following assertion region type question. Statement 1, ocean trenches are located parallel to volcanic arcs, right? Second statement, ocean trenches are formed by convergent boundary interaction. So this is a question based on the concept of geomorphology from the chapter geomorphology, and the underlying concept is plate tectonics. Plate tectonics, right? So first of all, let's understand what are ocean trenches. Ocean trenches are basically V-shaped depression on the ocean floor, right? So in order to understand this question, we will have to understand how ocean trenches are formed, right? So first of all, let's see important ocean trenches located in the world. So let's draw a rough map of the world. This is roughly a world map, right? And if you see some of the most important ocean trenches, one is Mariana Trench. Mariana Trench, which is located here. This is the deepest ocean trench in the world. Then there is one trench called Peru-Chile Trench. Peru-Chile Trench, which is located on the west coast of South America. And if you see on the map, there is one volcanic arc located parallel to all the ocean trenches. For example, along Mariana Trench, there is a volcanic arc called Mariana Volcanic Arc. Likewise, if you see along this Peru-Chile Mariana Trench, there is volcanic arc called Andes Volcanic Arc. So basically, all the ocean trenches are located parallel to volcanic arcs. So that means our first statement is correct, right? Now let's see why is this so. What is the reason behind such thing, such behavior? So for that we will have to understand the process of formation of ocean trenches, right? So ocean trenches are basically formed by convergent boundary interaction. Let's say there are two plates, they are converging towards each other. This is plate 1, 2, right? They are converging towards each other. That means coming closer. And let's say this place is denser as compared to this one, right? So when they come closer, what happens that this plate will subside below the less denser plate, right? Because its density is high, it will subside below the less denser plate. And as the subsiding part reaches a certain depth, the temperature here is sufficient enough to basically get this part molten, right? So because of high temperature, the subsiding part gets molten and gets converted into magma, right? So this magma formed actually then moves upward, right, pierces through this plate and then erupts into form of volcano, right? Volcano. So this forms a volcanic arc, right? Now what is happening here near the subsidence, near the interaction, convergent boundary interaction? What happens here is that here a V-shaped depression gets created, and this is what gets transformed in the form of oceanic trench, right? So here an ocean trench is formed and here a volcanic arc is formed. So they will always be located parallel to each other,
right? So that means second statement, ocean trenches are formed by convergent boundary interaction. This is also correct, and this is the reason for statement 1, right? So correct answer here is A. Now let's see the next question, that is question 95. It says a particular state in India is characterized by the following features, right? There are certain features given and we have to identify which of the following states exhibits all the above characteristics, right? So this is a typical question. Such type of questions are often also asked by UPSC sometimes, right? So let's see how to approach such type of question, right? We will see the given features first. First is predominance of tropical moist deciduous forest, right? So we know that distribution of these forests is actually little dicey. You cannot say that a particular forest is not present in any state, right? You can't say clearly regarding this, right? So let's read the second feature, presence of laterite soils across large areas. Then third feature is annual rainfall does not exceed 200 centimeter in any of its part. Presence of coastal border, right? This is the simplest feature given. So let's see what all can be eliminated based on this feature, presence of coastal border, right? So if we see the option, Odisha has coastal border, Kerala has coastal border, Karnataka has coastal border, but Telangana does not have coastal border. So one option is eliminated. Now let's read the third feature, annual rainfall does not exceed 200 centimeter in any of its parts, right? Now if we see the option, Odisha, Kerala and Karnataka, remaining options are there, right? So Kerala and Karnataka will not fulfill this characteristic. Why? Because Kerala and Karnataka are located along Western Ghat, right? This is Karnataka, and this is Kerala. And we know that on the western part of Western Ghat, that is on this side, the rainfall exceeds 200 centimeter, right? This is the highest rainfall area in India, one of the highest rainfall. That means some part of Karnataka as well as Kerala will have rainfall exceeding 200 centimeter. So using this feature, Kerala as well as Karnataka also gets eliminated. So the only option left is Odisha. So this will be the correct answer, right? Now the learning that you should draw from this question is that you should sometime use, in fact most of the time use elimination method to arrive at the correct answer, right? Now let's see the remaining two features, presence of laterite soils. So laterite soils are basically red to yellowish color soil. They are formed in areas where there is high rainfall with alternate dry and wet spells, right? So that means a spell of high rainfall occurs, then there is a dry spell, right? So such areas, if you see, these laterite soils are found in India along Eastern Ghats in these areas and along Western Ghats, right? So basically if you see Karnataka, Kerala, Odisha and Telangana, all of them are likely to have laterite soils, right? Then predominance of tropical moist deciduous forests. Tropical moist deciduous forests are found in area having rainfall around 100 to 200 centimeter, right? And this occurs in the foothills of northeastern state, then eastern part of Western Ghat, right? Odisha will also have some moist deciduous forest. So that means Kerala, Karnataka, Odisha and some part of Telangana will also have moist deciduous forest, right? But using the last two features, we are able to eliminate B, C and D. So A is the correct answer here, right? Now let's see the next question. This is question 96. The graph given below shows the mean average monthly temperature and mean monthly rainfall of a place in the northern hemisphere. In which of the following climatic zones of the world is the place likely to lie? So if you see, this is a question from the topic biome, right?
almost one question is asked from this topic almost every year. So this is an important topic from exam point of view, and that's why this question has been put in your test. So a graph is given, right, that shows temperatures and rainfall of a place in northern hemisphere, and we have to identify in which climatic zone that place will lie, right. So if we observe the graph here, this is rainfall, and this is temperature, right. So if we observe the graph of rainfall is almost uniformly distributed throughout the year, right. Only in some months around June, August, September, October, there is a minute spike here, right, only in 2-3 months. Likewise, if we observe the graph of temperature is almost uniformly distributed throughout the year around 40 to 45. Only in some months there is a slight spike of 10 to 15 degree Fahrenheit, right. So that means you can conclude that the temperature as well as rainfall is almost uniform throughout the year. Only in 2-3 summer months there is a slight spike in temperature as well as rainfall, right. So basically the conclusion that we draw from this graph is uniform climate throughout the year, right. And if you have read the topic biome, this is a typical feature of British type climate, right. So you could have easily arrived at your answer. The answer here, correct answer will be cool temperate western margin, that is British type climate, right. So now in order to see whether other options are possible or not, let's discuss them in brief. If you see China type climate, the first option, China type climates are located on the eastern margin of continent. So let's say this is a continent, China type climate will be located here, right, on the eastern coast. So because they are located on the eastern coast, they will have monsoonal feature, right. There will be heavy rainfall in summer months. So that means their graph should have shown very high spike in these months, right. As compared to other months, there have been higher rainfall in these months, very high spike, but that is not the case in the given graph. So this is eliminated, right. Now if we discuss the option B, this is temperate continental steppe climate. Steppe climate are found just on the left side of China type in the mid of continent. So this is where somewhere steppe climate will lie. So if you see, because they lie in the midst of the continent, they will have continental climate. Continental climate means they will not have influence of maritime influence on their climate, right. So that means in the summer month the heat will shoot up very sharply. So their graph should have been something like this, right. And rainfall in these climates, steppe type climate, is not much. There is only a scanty rainfall throughout the year, and only in summer months there are some significant rainfall. So rainfall graph for a steppe climate should have been like this, and this temperature graph should have been something like this, right. So this option is also eliminated. Likewise, if we see the D option, that is warm temperate western margin Mediterranean climate. So as you know, Mediterranean climate is known for warm and dry summer and wet winter. This is the typical characteristic feature of Mediterranean climate. That means summer months are dry and rainfall occurs in winter month, right. So that means the rainfall graph for Mediterranean climate will actually show deep in summer month, right. So during summer month the rainfall will decrease. So there will be a cusp here. Instead of increasing, it will decrease. So this option is also eliminated, right. So that's how you approach such type of question, right. C is the correct answer here, right. So with this we have come to the end of discussion. We have pretty much discussed all the questions of geography from your ANUBHAV test. I hope you find this discussion useful, and I wish you all the best for your preparation. Thank you very much. Hello everyone.
I hope you enjoyed solving the environment questions of the first test of our Anubhav series. Now, let's have a look at their detailed explanations. The first question deals with global warming and its associated implications. It reads as, the rapid warming of the Arctic region impacts global climate through which of the following mechanisms? First, weakening of the polar jet stream. Second, acceleration of thermohaline circulations in the Atlantic Ocean. Third, release of greenhouse gases from melting permafrost. The correct answer to this question is C, 1 and 3 only. To solve this, let us first understand what exactly is Arctic. The Arctic region is the northernmost region of Earth. It surrounds the North Pole and the latitude of 66 degrees 33 minutes north delimits the boundary of the Arctic in terms of solar radiations. The first statement says that warming of Arctic region could lead to weakening of polar jet stream. For this, we need to know the basic concept of polar jet stream as well. This is the flow pattern of polar jet stream. The jet stream is a band of westerly winds that flow in the lower layers of the atmosphere. Jet streams are created due to convergence of two air masses. This polar jet stream is created due to convergence of a cold air mass that is descending from the Arctic and the convergence of a warm air mass that is rising from the tropical regions. This leads to creation of westerly winds known as jet streams. Now, the statement says that when warming of Arctic could lead to weakening of polar jet stream. How? This is a correct statement, but exactly how? The jet stream, as we saw over here, that the jet stream is created due to convergence of two air masses. One is cold and the other is warm. When the air masses are strong enough, that is, there is good temperature difference between them, then it leads to creation of a strong jet stream. But if the Arctic Ocean is warming, then this cold air mass would become less cold, and as a result, the temperature difference between these two air masses would reduce, which would eventually lead to reduction in the speed of jet stream that would ultimately weaken the polar jet stream. I hope you understood this concept. The second is also concept that we study in geography, which is of thermohaline circulation. The statement says that warming of the Arctic region could lead to acceleration of thermohaline circulations in the Atlantic Ocean. This statement is incorrect. How? Let us see. Thermohaline circulations are a slow-moving band of current, deep ocean current, that traverse the global oceans. They are named so because they are created due to variations in temperature and salinity. Therefore, the name thermo and haline circulation. Let us see the mechanism of the creation of these circulations. What happens is, we know that the sea waters in the Arctic region are very cold. When the temperature of these sea water falls below the freezing point, it leads to formation of sea ice. It leads to formation of ice. When the ice is formed from the sea water, the salts of the sea water are left behind. These salts increase the salinity of the sea waters in this area. So, we know that the saline waters are more dense, and because of being more dense, these waters sink in the ocean, as is depicted in this diagram. These waters sink in the ocean, and over here a
void is formed. So the water from the tropical region come to this area to fill the void. In such way, this water also gets cooled over here, and when the temperature again falls below freezing point, this water starts to form ice, and when again the ice is formed, again the salinity of the water, surrounding waters increases and it again sinks. In this way, a circulation is taking place across the global oceans. When we see Atlantic Ocean, these thermohaline circulations are very prominent. So, coming back to our question, it says that warming of Arctic could lead to acceleration of thermohaline circulation. This is incorrect. Why? Because the main cause of formation of the circulation is the difference in the temperature and salinity. When Arctic region would become warm, this would lead to reduction in the temperature difference between the northern and southern region. If the difference in temperature is reduced, then it would lead to weakening of the thermohaline circulation and not acceleration of thermohaline circulation. Hence, this statement is incorrect. Coming to third statement, this is a correct statement. It says that warming of Arctic region could lead to release of greenhouse gases from melting permafrost. Permafrost is that region of the earth and rocks where temperatures are maintained at or below 0 degrees Celsius. For consecutively 2 years. A vast majority of organic matter is found in this permafrost. It is an important component of our cryosphere. When the Arctic would warm, it would lead to melting of permafrost, which would eventually lead to increase in microbial activity in the permafrost region. The increase in microbial activity would lead to decay of the organic matter that is present in permafrost, and as we know that when any matter decays, it leads to release of gases such as carbon dioxide, methane, which are classified as greenhouse gases. Hence, the third statement is also correct. Hence, we have the answer 1 and 3 only. The answer is C. This is a conceptual question which also requires you to be thorough with the concepts of climatology in geography. Coming to the next question. It says that a wildlife enthusiast plans to visit national parks in India with the highest populations of tigers, lions and cheetahs. Which of the following set of states should he include in his itinerary? So basically, this question is asking us that you just name the national parks which have the highest number, the largest number of the given species. So tigers, first is tiger. The largest number of tigers is found in Jim Corbett National Park, which is present in the state of Uttarakhand. Coming to lions, we all know that the only habitat of Asiatic lions in India is the Gir National Park and Wildlife Sanctuary, which is present in the state of Gujarat. The third is cheetah. We know that Asiatic cheetah became extinct in India in the year 1952. So, as part of Project Cheetah and Cheetah Reintroduction Program,
the government of India signed MOUs with 2 African nations to bring back the cheetahs in India. So, the 8 cheetahs were brought from Namibia in 2022 and 12 from South Africa in 2023. 12 cheetahs were brought from South Africa in 2023. They are relocated in Kuno National Park of Madhya Pradesh. So, the largest population of cheetahs is found in the state of Madhya Pradesh. To have a rough idea of the numbers, approximately 206 tigers are found in Jim Corbett National Park, which is the largest for any national park in India. However, it shall be noted that as per the tiger estimates, the state with the highest number of tigers is Madhya Pradesh. It has approximately 785 tigers. But when we look at national parks, it is the Jim Corbett National Park. In India, there are about 670 lions and cheetahs. At present, the strength of cheetahs is about 24. I hope this question is clear to all. Coming to our next question. It says that the United Nations has declared 2024 as the International Year of Camelids. Consider the following statements about the camels in India. This question tests our awareness about camels in India. The first statement says that Kharai camels are single-humped camels primarily found in Rajasthan, and the second statement reads as Bactrian camels are double-humped camels primarily found in Nubra Valley of Ladakh. The correct answer to this question is B, that is 2 only. First of all, let us have a brief idea of what exactly are camelids. Camelids are animals that are found in arid and semi-arid regions of the world. They include, one is camels, the other is llamas, and the third is alpacas. These camelids, these animals provide various services to humans where other animals would not be able to survive. They can survive in extreme arid and semi-arid climates. So, the first statement says that Kharai camels are single-humped camels. Till now it is true, Kharai camels are single-humped. As can be seen from this picture, this area is known as the hump of the camel. So, this is true, they are single-humped, but they are not found in Rajasthan, but in Gujarat. In fact, the UPSC has asked a question on Kharai camels previously. The Kharai camels is a unique breed of camels that have the unique ability to swim. We can see them swimming in this region, in this photo. These camels can swim for large distances and they are primarily found in Gujarat. They are managed by 2 main communities. One is the Fakirani Jats This is the rearing community which rears and manages the Kharai camels. The other is Rabadis. These are the owners of Kharai camels. So, though they are single-humped, but they are found in Gujarat and not Rajasthan. The second statement says, Bactrian camels are double-humped and found in Nubra Valley of Ladakh. This is a true statement. See,
in this picture we can see that there are two humps of this camel. This is an image of Bactrian camel. It has two humps and it is found in Nubra Valley of Ladakh. Along with the Nubra, it is also found in China and Mongolia, some regions of these countries. This camel, double humped Bactrian camel, is also found. So, the correct answer would be B. Now, this hump, the primary function of this hump is to store fat which can be converted into energy and water whenever the need arises. Coming to the next question. This also is an applied question which tests the conceptual understanding. This question primarily deals with a novel concept of enhanced rock weathering. Okay, it states that the application of crushed silicate rocks to the soil can enhance the sequestration of atmospheric carbon dioxide. This is the first statement. The second statement says that adding crushed silicate rocks can increase the process of rock weathering. And the third statement says that crushed silicate rocks react with atmospheric carbon dioxide to form stable carbonates. The correct answer to this question is A. Both of these statements are correct and both of them explain statement 1. So, before understanding the concept of enhanced rock weathering, let us first understand the basics of weathering. Weathering refers to breakdown of the rocks and minerals present on the surface of the earth. Now, it is caused due to various agents which can be physical, chemical and biological agents. The main agents of weathering are water, wind, ice, microbes, etc. When rocks are weathered, they lead to formation of calcium and magnesium. And carbon dioxide present in the air also undergoes through various natural processes which eventually lead to formation of carbonic acid. This weathering, it locks carbon in the rocks and hence it is a carbon removal technique. But for natural weathering to occur, it takes thousands and lakhs of years. So, the researchers came out with a concept of enhanced rock weathering. The enhanced rock weathering builds upon the concept of natural weathering and it tries to increase the rate of weathering so that we could sequester a large amount of carbon. The principle of enhanced rock weathering rests upon the interaction of these rocks as well as the carbon dioxide that is present in the atmosphere. Now let us have a look at our question. What is asked? Statement 1 says that application of crushed silicate rocks to the soil can enhance the sequestration of atmospheric carbon dioxide. This is a true statement. Now, second and third are also true. Let us first look into third statement. Crushed silicate rocks react with atmospheric carbon dioxide to form stable carbonates. As we have already studied that the two rocks which are prominent in enhanced rock weathering include silicates and basalts. So, if we add the crushed silicate rocks, then they react with the atmospheric carbon dioxide to first form carbonic acid. This carbonic acid then reacts with various other minerals to form stable carbonates. The prominent carbonate among them is calcium carbonate, which is also referred to as limestone.
In this way, statement 3 explains statement 1. Now, the second statement says that adding crushed silicate rocks can increase the process of rock weathering. This statement is also true and it explains statement 1. How? If we crush the silicate rocks, this leads to increase in surface area of the rocks. When the surface area is increased, it leads to increase in chemical reactions that is taking place between the rocks and carbon dioxide. If this chemical reaction is enhanced, then naturally there would be more sequestration of carbon dioxide and it would eventually lead to increase in process of rock weathering. Hence, the correct answer is A. Coming to the next question. The next question deals with greening of Antarctic Peninsula. It says that which of the following are likely implications of the ongoing increase in vegetation cover in Antarctica? A recent study says that Antarctic Peninsula, it is a region in Antarctica, prominent region in Antarctica. The Antarctic Peninsula has observed a 10-fold increase in its vegetation cover from the year 1986. This is a worrisome fact. Why? Because this has happened mainly due to rise in temperatures. The first statement of our question says that reduction in regional temperature due to enhanced carbon sequestration will. It asks us whether increase in vegetation cover in Antarctica, will this lead to reduction in regional temperature due to enhanced carbon sequestration? This statement is incorrect. Why? Because the vegetation cover that is found in Antarctica is primarily mosses. We know that these are among the few pioneer species of ecological succession which colonize a particular area at the very beginning. I also have a picture to show you. See, these are mosses which are found in Antarctic Peninsula. So, these mosses, the amount of carbon that is sequestered by these mosses is way less as compared to the amount of radiations that is reflected, that would have been reflected by the Antarctic Peninsula if it was ice covered with snow and ice. Now, let us understand this mechanism of reflection of sunlight. We all know that the light surfaces have higher albedo. Albedo is the ability and capacity of a substance or surface to reflect back the sunlight. The substances having light color, for example, fresh snow, ice caps, light colored sand, they have higher albedo, that is, they reflect more amount of sunlight as compared to the darker substances which have less albedo. So, if vegetation cover would increase in Antarctica, that means the Antarctic region would become darker. It would lead to increase in albedo. So, the impact of this increase in albedo would be too large as compared to the carbon that would be sequestered by the mosses. Hence, this statement is incorrect. It would not lead to reduction in regional temperature. The second statement, it is correct. It says that disruption of local ecosystems potentially allowing the introduction of non-native species. This is a likely consequence of increase in vegetation of Antarctica. How? We know that the soils in Antarctica are not very well developed. But if vegetation cover would increase, it would lead to addition of organic matter and thereby formation of new soils.
if new soils would be formed, it would be easy for the non-native species of plants which could be brought to the Antarctica by various wildlife enthusiasts or scientists. This would enable the non-native species to thrive in the Antarctic region if there are well-developed soils. Hence, increase in vegetation cover in Antarctica could lead to disruption of local ecosystems, potentially allowing the introduction of non-native species. This is a correct statement. So, the answer to this question would be B, that is 2 only. Coming to the next question, it says that which of the following areas is notified under the Environment Protection Act 1986 to function as a shock absorber for specialized ecosystems and serve as a transition zone between areas of high protection and those with lesser protection? The correct answer to this question is C. It is the eco-sensitive zones. To conserve and preserve biodiversity, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change declares eco-sensitive zones around the protected area under Environmental Protection Act 1986. These zones serve as a shock absorber between the areas that are given high protection and the areas which are awarded lesser degree of protection. The main aim of declaring eco-sensitive zone is to reduce the impact of human activities on environment and thereby maintain and conserve a sustainable environment. Coming to the next question. This also is a conceptual question about cloud seeding. It says that in the context of cloud seeding, which of the following conditions is or are required for successful artificial rain generation? First, availability of moisture-laden clouds. Second, adequate concentration of chemical nuclei. And third, high wind speeds to disperse seeded particles over a larger area. The correct answer to this question is B, that is 1 and 2 only. Let us briefly understand the concept of cloud seeding. Cloud seeding is a weather modification technique which increases the likelihood of precipitation by introducing certain chemicals in the cloud. So, for successful artificial rain generation, whether the availability of moisture-laden clouds is essential condition or not, this is a correct statement. Only if there is enough moisture in the cloud, then we could expect the condensation to take place and then eventually the precipitation in the form of either rain or snow. Without sufficient moisture, even if the particles are introduced into the cloud, it would not lead to condensation. So, the first is a required condition. Second, adequate concentration of chemical nuclei. This also is a correct statement. These chemical nuclei act as hygroscopic nuclei which provide a surface for the water droplets to condense around them. So, in effect, the water droplets condense around these hygroscopic nuclei and leads to formation of larger droplets that could eventually lead to occurrence of precipitation. So, this also is a correct statement. Coming to the third statement, high wind speeds to disperse seeded particles over a larger area. This is an incorrect statement. Why? If the speed of wind would be very high, it would lead to dispersion. It would lead to dispersion of the particles, that is chemical nuclei, away from the cloud.
So it would not aid in the process of artificial rain generation. It would in fact deter such process. The common material which is used as a chemical nuclei is silver iodide. So this was the question about cloud seeding. Coming to the next question, which asks us about two species. These are recently discovered species. The first statement says that Ceropegia shivrayana, named after Chhatrapati Shivaji Maharaj, is a flowering plant. This is a correct statement. A new species of flowering plant named as Ceropegia shivrayana has been discovered in Maharashtra, which has been named after the legendary Maratha ruler Chhatrapati Shivaji Maharaj. You can have a look at this species. This is the flowering plant. And the next statement says that Botulistes chandrayani, named after Chandrayaan-3 mission, is a butterfly. This statement is incorrect because this Botulistes chandrayani is not a butterfly. Though it is named after Chandrayaan, but it is not a butterfly. It is a tardigrade. What exactly is a tardigrade? You can have a look at its image here. This is a tardigrade. These are microscopic creatures which have been discovered from Tamil Nadu. A speciality of these creatures is that they can survive in extreme weather and climate. This newly discovered species has been named after the Chandrayaan-3 mission of India. Hence, the correct answer of this question would be A, that is one only. Coming to question number 77, which says that consider the following statements regarding deep sea mining. The Government of India holds a contract for the exploration of polymetallic nodules in the Central Indian Ocean basin. The second statement says that deep sea mining has not yet been commercially undertaken anywhere in the world. The third statement reads as the International Seabed Authority regulates mining activities beyond the exclusive economic zone of countries. The correct answer is D. All of these three statements are correct. So, the first statement asks about polymetallic nodules. What are these? These are mineral nodules that are found in vast areas of oceans. They are also known as manganese nodules as they are primarily composed of manganese and iron. They could also have a few other minerals and metals such as nickel, cobalt, etc. They look like potato, so they are a potato shaped nodules. Good source of various minerals and rare earth chemicals for us. Let's have a look at these nodules. This is a photo of polymetallic nodules. See, they are looking like potatoes. So, the first statement asks us, the Government of India holds a contract for exploration of polymetallic nodules in the Central Indian Ocean basin. This is true. The government has in fact entered into a contract with International Seabed Authority for their exploration. The second statement says that deep sea mining has not yet been commercially undertaken anywhere in the world. This statement is also correct. Only explorations and pilot projects for deep sea mining have been undertaken, but no commercial exploration till date has taken place anywhere in the world for deep sea mining. The third statement is also correct. The International Seabed Authority, it has been established under UNCLOS, that is the United Nations Convention on Law of Seas. It regulates mining activities beyond the exclusive economic zone of countries. This is a correct statement. So,
The answer to this question would be D, that is all correct. Coming to question 78, it says that consider the following statements regarding the green credit program launched by the Government of India. First, it aims to enhance credit availability for low carbon intensive industries. Second, it operates as a voluntary mechanism to incentivize environment friendly activities. And third, both individuals and companies are eligible to obtain green credits under the program. The correct answer to this question would be only two. That is, only two out of these statements are correct. The first statement is incorrect. The green credit program is a market-based mechanism that aims to incentivize environment-friendly practices. It does not directly deal with provision of credit availability. It is a mechanism which encourages environmental friendly and sustainable practices. The second statement says that it operates as a voluntary mechanism to incentivize environment friendly activities. This is a correct statement. It incentivizes various activities that leads to sustainable development and the activities which are friendly for the environment. The third statement reads as both individuals and companies are eligible to obtain green credits under the program. This statement is also correct. Actually, this green credit program was launched by the Government of India in 2023 to take forward the mandate of Mission Life. We know that Mission Life also deals with adoption of various habits and practices that would help a lot in ensuring sustainable development and conservation of the environment. Coming to question number 79, it says, consider the following statements regarding COP29 of the UNFCCC held in Baku, that is Azerbaijan. Statement first says that India advocated for increasing the share of private sector investments under the new collective quantified goal framework. Statement 2 says that India asserted that $3 billion annual climate finance committed by developed countries is inadequate and requires a substantial increase. The correct answer of this question is D, that is, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. We know that for achieving the Paris Agreement goal of limiting the rise in temperature to well below 2 degrees Celsius from the pre-industrial levels, we need to stress a lot upon reduction in emissions of gases. But these reduction in amount of greenhouse gases could happen only if we transition from fossil fuels based economy to clean sources of energy. And for transitioning to clean sources of energy, the developing and underdeveloped countries of the world need a lot of finance for incorporating clean solutions into their economies. We also know that finance is a major issue that halts any of the climate related process. In backdrop of this, NCQG has been launched at COP29 held in Baku. NCQG is actually a framework for providing finance for clean solutions, clean environmental solutions. So, the first statement says that India advocated for increasing the share of private sector, which is really an incorrect statement. The official stand of Government of India at Baku was that the contributions, the financial contribution should come from the developed countries as mandated under the goal
taking the contributions from private sector would lead to defeat in the purpose of NCQG. Hence, this statement is incorrect. The second is a correct statement. India said that this $3 billion is a very less amount, and it requires a lot of finance, a lot of increase in this finance by developed countries to achieve the goal as stated in Paris Agreement. This meager amount also defeats the purpose of CBDR, that is common but differentiated responsibilities, and also it defeats the principles of equity between the nations. So first statement is incorrect and the second statement is correct. Answer would be D. Coming to question number 80. Consider the following statements regarding tiger reserves in India. First, the answer to this question is C, that is all of the above mentioned statements are correct. The first statement says that tiger reserves are notified by the state government on the recommendation of NTCA. This is correct. The Project Tiger was launched by the Government of India in the year 1973. The objective of the Project Tiger was to have a viable population of tigers in their natural habitat. So, the tiger, it mandated for establishment of certain tiger reserves in various protected areas wherein the tigers could be provided a greater degree of protection. So these reserves are notified by the state governments on recommendation of NTCA under the provisions of Wildlife Protection Act 1972. The second statement says that boundary of a tiger reserve can be altered by the state government only with the prior approval of National Board for Wildlife. This statement is also correct. Please see for yourself who heads the National Board of Wildlife. The third statement says that tiger reserves can be denotified by the state government only with prior approval of both NTCA and NBWL. This statement is also correct. This is bit of a factual question, but it is very important, it is very essential to know about all of these provisions. Coming to question number 81. It says, consider the following statements regarding dichloro-diphenyl trichloroethane, commonly referred to as DDT. First, the use of DDT is banned and prohibited for all purposes under the Stockholm Convention. Second, India is currently the only producer of DDT in the world. The correct answer to this question is B, that is 2 only. The Stockholm Convention is a convention on persistent organic pollutants. These are various industrial chemicals and pesticides which could be detrimental to the environment. So, the Stockholm Convention tries to reduce and eliminate the use of these persistent organic pollutants. For this, the Stockholm Convention lists 21 such chemicals. This first statement says use of DDT is banned for all purposes. This is not true. The use of DDT is banned for agricultural purposes. DDT actually is a potent pesticide and insecticide. So, it was largely used in agriculture, but now under the Stockholm Convention, its use has been banned. We also know that increased use of DDT in agriculture led to decline in the population of vultures in the country. This is also a reason why it is a very harmful
chemical and is banned in agriculture. Second, India is currently the only producer of DDT in the world. This statement is true. India has obtained a license for production of DDT. DDT is currently used for vector control program. So the answer to this question would be B, that is only the second statement is correct. Coming to our next question, it says that consider the following statements about Central Pollution Control Board, that is CPCB. The correct answer is B, that is 1 and 3 only. Statement 1 and 3 are correct, whereas second is incorrect. The first statement says that CPCB was established under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. This is a correct statement. Additionally, the CPCB is also entrusted with the powers under Air Pollution Prevention and Control Act 1981. CPCB is also entrusted with powers under this act. So, this statement is a correct statement. The second statement says that CPCB implements the Graded Response Action Plan for Delhi and National Capital Region. This statement is incorrect. It is not the CPCB that implements GRAP, but some other organization. So, what exactly is Graded Response Action Plan? This is an emergency plan for the Delhi NCR region to combat rising air pollution. This plan comes into force when the air quality reaches to poor levels. The GRAP in Delhi NCR region is managed by Commission on Air Quality Management, that is the CAQM. Commission on Air Quality Management implements the Graded Response Action Plan in Delhi. So this statement would be incorrect. Statement 3 says that CPCB is mandated to lay down an NL standards for the quality of noise. This is a correct statement. Among various functions of the CPCB, this also is a major function. Hence, the answer would be B, that is 1 and 3 only. Coming to the last question of environment, which is about microplastics. So, these microplastics are minuscule particles of plastics whose size is less than 5 millimeters. These microplastics can be found in various regions of the world, including oceans, land, and even in drinking water. They are very hazardous for humans as well as the environment and biodiversity. Let us have a look at the given statements. The correct answer to this question would be B. This statement, the question asked that which of the following statements about microplastics is not correct? This is statement B. Actually, microplastics are manufactured for various industrial and chemical purposes. They are also used as exfoliants in cosmetic industries. The microplastics which are manufactured specifically for various purposes are known as primary microplastics, and the microplastics that results from degradation and breakdown of these primary microplastics are referred to as secondary microplastics. So, the statement B says that they are not specifically manufactured but results from the breakdown of larger plastic debris. This is not correct because as we have seen, primary microplastics are specifically
manufactured for use in various industries. And those microplastics that result from breakdown of larger plastic debris are known as secondary microplastics. To have a glimpse of these microplastics, let us see a picture. See, this is a picture which is a part of the Great Pacific Garbage Patch, GPGP. We can see these microplastics are concentrated in an area and it proves detrimental for the marine biology. Statements are correct. The first is airborne microplastics can deposit on land and water through precipitation. This is a correct statement. We see a lot of microplastics on land as well, and the oceans we have seen in this picture. Statement C says that microplastics can be inhaled by human. This statement is also correct. Inhalation of microplastics leads to various respiratory diseases for humans as well as animals. In fact, it also reduces the capability of plants to photosynthesize. Statement D, microplastics are used in cosmetic products due to their effectiveness as exfoliants. This statement is correct. They are increasingly getting used in various creams and also scrubs because they function as good exfoliants. It is noteworthy that many of the countries of the world have actually banned the use of microplastics in cosmetic products, but they are still in use in many countries. So we are done with the explanation for environment questions. I hope you liked it. Thank you.